Jamia Millia Islamia, Delhi itself, Delhi traffic scenario is unpredictable. So though I had a margin of 1 hour, but I still caught up in traffic, so inconvenience regretted. But I hope instead of deferring the timing of my lecture, I would like to, sometimes I may mute my video, but I would like to continue my lecture, and maybe once I reach to my office, 2 or 3 minutes I'll take and shift to my laptop. So far, this theme of institutional development plan is concerned. Uh, Two, three, important points need to be taken into account. In fact, when I was being introduced, the importance of the theme has already been underlined. And really, it is also disheartening to know that many of us are not aware about the core premise and the whole idea behind institutional development plan. It may not be wrong to see that many institutions, though, for example, if you are going for NAC accreditation, if you are taking grants under RUSA or now PMUSA, one of the mandatory requirement is that institutional development plans should be in place. But even in some of the good institutions, a good rated institution, when I ask the faculty colleagues, are you aware about an institutional development plan? In the first case, I asked this question: do you have your own institutional development plan? They said, yes, we have. And this was submitted to uh, PM USA or RUSA scheme, earlier World Bank, etc. And if it is NAC accreditation, NAC, etc. But I say that how this institutional development plan was prepared. Do you have any idea whether you were already involved in institutional development plan or not? Again, it was disheartening to know that majority of the faculty, they are not sure about the purpose of institutional development plan, the processes it follow, and also the intended objective which can translate into outcome. These are really, important concerns with regard to institutional development plan. It is not that we have long years of our institutions. Even if our three universities were established in 1857, uh, even after that, we have a number of institutions, and institutions have been running. It is not that there was no idea of planning. It was not. It is not that the institutions say work in haphazard manner. It is not. But institutional development plan is one important document which can serve as a tool for institutional improvement, and if I'm allowed to say, as a tool of institutional excellence. This should be our entry point. The national education policy has highlighted specifically about the institutional development plan. But it also announces a kind of departure from our earlier approach to develop institutional development plan. Because earlier it was a group of senior faculty, it was consultant, or those who, or people who are already in leadership position in other institutions, they took lead and prepared the institutional development plan. So as a result, the ownership of the faculty, ownership of the stakeholders of institution, that is missing, because you have not been a part of this whole idea of institutional development plan. So one of the first important requisite is to have a consultative process that the stakeholders of the university and institution must be a party to the entire process of developing the institutional development plan. And that is the idea. This idea must be taken into account if we are talking about well-informed blueprint for institutional development and institutional excellence. Again, the rightly pointed out when I was being introduced that it may have also target. It may have also a kind of vision about the institution. For example, if you are one autonomous college,
Now, the national education policy provides you opportunity to emerge as a full-fledged university. And we have come across number of autonomous colleges. We are also closely, not essentially working, but close linkage with the University Grants Commission. And University Grants Commission, the number of institutions are being added every month, every say year. And one important development is that many institutions which were declared as autonomous colleges, now they are aspiring to be a university or deemed to be university. Okay, so this is also a kind of say vision emanating from the experiences of the institution. So therefore, if you are talking about your own institution, there must be thinking. It should not be just routine matter that you have these many faculty, you have these many resources, you have courses, you have programs, you have a student, and that is running. That is a really important one. But blueprint for the future, this is also important. Whether you would like to remain on the same platform, at the same place, or would like to grow, it is more than evident that every one of us, whether it is a case of individual or case of institution, we also want to develop and grow in terms of our say years, and we also set a kind of target that next 10 years, 15 years, 20 years, we would like to become a full-fledged university. Even if you are an excellent institution, even if you are a premier institution, if you just see, many institutions are still more than 12,000 institutions are a stand-alone institution. Do you think that these institutions will survive in coming years? Certainly not. The national education policy had made it clear that a stand-alone institution multidisciplinary institution or the part of, say, full-fledged multidisciplinary institution, etc. So multiple options have been given. So definitely one moot point here is that all institutions have to develop as a multidisciplinary institution. So if multidisciplinary institution, that is a mandated requirement, need for every institution, what is your thinking? What is your roadmap? If you are today, if you are a stand-alone institution like teacher education or architecture, nursing, allied health sciences, but now you have to convert that, develop as a multidisciplinary institution. So the idea here is that institutional development plan should be a starting point for thinking and deliberating or contemplating about the future of the institution. And the University Grants Commission has come up with definitely a kind of well-informed document. I do not know how many of you got chance to go through the guidelines of the UGC regarding institutional development plan. Many of you may be thinking that what this professor is talking about. Many of you may be entry-level say teachers. Many of you may be just committed teacher and teaching the courses. And you consider that this is our say mandate and which we are doing. Why do we need to go for institutional development plan? Let our principal, let our deans, let our vice chancellor, they should develop institutional development plan rather than we as a teacher. We do not have immediate thing to do with once we go to a leadership position, we can go for institutional development plan. That kind of thinking is not at all can be a basis for, say, institutional excellence. Now, each and every faculty is not simply a teacher. He or she is an integral part of the institution,
and also role and responsibilities with regard to institutional development plan. So therefore, institutional development plan is a mandate not only in terms of compliance of UGC guidelines and regulations, not only as a compliance of NAC accreditation, rather than institutional development plan should ideally be considered as an important document, important tool for improving the institution. You can learn, I take cue from NAC SSR. Many of you, whichever institution you belong to, if you recall, if your institution is going for accreditation, while going for accreditation, you take for granted that you are an excellent institution, you are a premier institution. There is hardly need to get accreditation from NAC or rank in the NIRF. Not necessarily. You have a self-perceived image about your institution. But if you volunteer yourself or as mandated by NAC, if you are going for accreditation, you also find, because you will be starting the exercise of developing your self-study report. If you are developing your and I'm also a party of I'm a member of one of the groups. What is important to note that in institutional development, NAC accreditation and self-study report, there were 7 criteria, and once you go by criteria, for example, curricular aspect, or teaching learning, or research and innovation, or governance and leadership, it appears to be very simple. That is, if higher educational institutions are there, that will remain like that. There is hardly any need to think about these criteria and fill. Once you start filling up the information sought by the NAC as a part of your self-study report, you will realize that yes, many things we are doing, but we do not have any record. We do not have a sound system in place. Therefore, this also provides you opportunity to work for this, even if it may be as a measure of compliance. So, for example, in every college, in every university, a number of committees are formed by the vice chancellor or whoever is head of the institution. These committees are headed by generally by a senior faculty and others, and that is fine. But many times, meetings of these committees are not held. And most of the time, these institutional structures or committees appear to be a kind of ceremonial exercise. And therefore, no meeting, no minutes, no action taken, no point of discussion. But once you go for NAC accreditation and say prepare your self-study report, you have to give evidence that do you have a statutory body? What is the structure of your governance? How many times your governance structure meeting takes place? What are the agenda of your governance structure? What are the points of discussion and decision? If decision has been taken in your statutory bodies like Executive Council, Board of Management, or Academic Council, or Board of Studies, whatever decision has been taken, whether those decisions have been implemented in your institution or not. So this relates to action taken report. In majority of the cases, what you find that many times there is no recording, since you say that there is no urgent agenda and therefore once in a year the meeting it takes place, that is fine. Or whatever, for example, equal opportunity sale. Maybe one of the institutional structure in your own university. You think that this is sufficient structure is already in place. And we have not received any complaint with regard to discrimination and other. And you feel satisfied that okay, no need to go for this. Or even if you have
gender sensitization cell, women empowerment cell. You feel that no need. Our female colleagues are empowered. Their interests are being taken care of. There is no case of discrimination, exclusion, harassment. So you go by assumptions, and therefore you do not do anything. You keep on waiting for any complaint to come. Once complaint comes, then you start working on this. Do you think that this is a good idea to go ahead? Certainly not, because you are grievance driven rather than proactive supportive mechanism in the institutional context. So therefore, taking cue from this kind of practices, if we are developing, say self-study report for NAC, definitely these informations are asked from you, and you have to give evidence that these many things we had. These are the structure. These are the action taken report. Our this. Also, a student satisfaction survey we conduct. Students are part of our governance processes. Said teachers are part of each of the bodies. All these would be supported by evidence. In a way, these kind of requirements opens up possibilities for you to put in place your own institutional strength. If there are weaknesses that your bodies are not being represented by a student, if your institution is not working as per the guidelines of the statutory bodies, if participatory governance is not happening, if collegiality is missing your ethics, definitely you take action, because you cannot just defer, you cannot just dismiss, because you have to go for accreditation, and therefore you take proactive action. You try to come up to the expectation of the statutory body's requirement or accreditation body requirement in terms of evidence. So this is a good learning or good starting point to support the idea of institutional development plan. In a similar manner, institutional development plan is a requirement not just for compliance, but as a tool of improvement, as a tool of say vision for 10 years, 5 years, 20 years, a roadmap for your own institution. That should be the idea, to connect to the idea of institutional development plan. So that is first important component. Coming back, and given this background, all of you would agree now, taking cue from our points, that institutional development plan is now a requirement for institutional development rather than compliance for UGC. It is not. So if we are starting with this premise, if we are starting with this assumption, definitely we have to define our own roadmap. What could be the roadmap for institutional development plan? So first of all, what are different steps that need to be followed when we are developing our institutional development plan? So there are many steps. But before coming to the steps of institutional development plan, and I would more focus on academic planning, I have reached to my office. I'll take 2 minutes, say a break, so that I could place my system in order, and I'll come back to you. I am muting my video for a moment, and
So now I'm back. Sorry for inconvenience. We had started the discussion that was related to first component. What is the rationale and logic of, say, institutional development plan? I hope you are. I'm audible. I'm audible. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, loud and clear. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Sir, if you want to share the screen, you can share, sir. I have given the right, sir. Okay, so a screen sharing, I do not have PPT. I'll be sending the PPT. What I consider when I'm making presentation to PPT, it obstructs my thought and way of Okay, sir. thinking. Okay, okay. Please be continued, sir. So immediately after this lecture, I'll be sharing with you PPT and support material. Okay. So coming back to the idea, the first component I was trying to justify, and that component relates to the whole idea of rational and logic of institutional development plan. And we already say discussed in detail about various aspects related to institutional development plan. Logic, drawing a kind of point from our NAC SSR report. And I was just to repeat the same point that in SSR, when we start preparing the document, we come to know the limitation of our own institution. That this is the limitation, and we start working on those limitation or those aspects. In a similar way, institutional development plan is a good document, vision document for institutional growth. But in the beginning, I already mentioned here that the institutional development plans should not be developed by just by the institutional leaders or consultant or a senior faculty. Of course, role of senior faculty, institutional leaders, and others may be very, very important. But at the same time, the institutional development plan guidelines of the UGC clearly states that institutional development plan should be prepared through a consultative process. It means each and every stakeholder of higher education institutions, they should be part of the institutional development plan. For example, if you start the process of institutional development, who are your stakeholders? At most, you will say that our student, our teachers, our say administrators. I mean, in administration, institutional say leaders, deans of faculty, heads of the department. That is the obvious. I mean, a stakeholder we talk about. Do we think about community at large? Perhaps not. So, community of at large could be parents and community at large, yet another important stakeholders of higher education institution. In the changing context of higher educational institution, what is important to note here that industries, prospective employers from outside your institution, they are really, really important stakeholders. And therefore, if we are talking about close link between institution and industry, or close link between academia and industry to facilitate a smooth transition of a student from institution of higher education to the world of work, how can it happen? It can happen only if we have close linkage that our student may be provided internship opportunities. So the whole idea of earn while learn that can be implemented in your institution. Who will do that? Obviously, the industries or the prospective employers in variety of. I'm not just talking about government jobs. I'm talking about prospective employers. If prospective employers are part of your institutional development plan, they can give you idea what is the demands. So your students are not transiting to outside world from a supply side, but also demand side. Who will let you know what is the demand of the industry? What is the demand of different
sectors, what is the demand of corporate groups, what is the demand of society at large. So if you put them in place, if they are member of your the whole process of institutional development plan as a part of consultative process, definitely that can help you to develop a well-informed institutional development plan. And therefore, this is the first important component. Second important point, what could be the possible, say, reference points for institutional development plan? If you are preparing institutional development plan, it is not just for today. Every year you may have your own academic calendar. You have also some roadmap for, say, financial management, budgeting, etc., for financial area, etc. But you are preparing institutional development plan for today, tomorrow, and day after. It means over the years, what will be the roadmap for your own institution? And if you are thinking about the future of institution, future roadmap for institutional growth and development, definitely the references should be in place. What could be the immediate reference point? For example, if you are talking about reference point, first important reference point could be in terms of, say, what is the trends in education? What is the emerging trends in education, and what are the demands in case of, say sector, education sector? What are the new developments in the area of education? This could be the generic kind of reference point. You cannot take a position that if your institution is there, it will be 100% supported by the government for all time to come. It is not, because there will be a time wherein you may be asked to generate your own resources, support yourself. You may be provided complete autonomy to do this work. So definitely this should be constitutive of your vision about the institution. Therefore, one important reference points would be in terms of development across the sectors and putting education at the center. That could be the important starting point for this. That what are the development taking place? What kind of demands are coming in? What are the pedagogical processes? Some 20 years, 25 years, we had not imagined the role of technology. Given my age compared to you, much senior, and when I started my career, at that point of time there was simple typewriter, and the speed of typewriter was more dependence on professional, say, typist, or if I could manage little bit, if the speed was very, very limiting factor. Now you can say take so many things with the help of computer and all. So that is a technological advancement. So if you are envisioning the education, if you are envisioning your own institution, you cannot start with the baggage of the past. I'm not suggesting that past should be forgotten. Past could be an important point of instruction for you to decide about the future. You can learn from the past, but you cannot just go to the past. For example, if 20th century was the century of a specialized knowledge, so a specialization was the major reference point in higher educational institutions. Can you imagine this education in the contemporary context? Certainly not. At the global level, more and more emphasis on multidisciplinarity, twinning of variety of programs. So multidisciplinarity, flexibility in terms of learning experiences of children, also a kind of departure from submissive mode of assessment and evaluation of learning outcome to a more formative, continuous, flexible assessment of a student learning. This is yet another important development. We hardly thought, in the past, some 4 years, 4 decades ago, we hardly thought about skills and employability. This was almost absent from our say lexicon. I mean, academic lexicon. We were not referring to skills and employability.
it was considered that whatever is happening within the colleges and institution, if teaching is happening, and institutions of higher education or colleges, they are the institution to generate fundamental knowledge. Knowledge generation is the basic responsibility, and therefore this institution could be considered as a site of knowledge generation rather than a skill formation. The negative effect came into picture, that we created a kind of dichotomy, a kind of hierarchy between general education and vocational education. So the students who are pursuing ITI or similar kind of courses, they were treated as inferior to the student who are going to the general education colleges or who are taking general education. So this is also a part of reality. But can you imagine the same kind of situation in today's case? Certainly not. And therefore, one important reference point you can identify, that what could be the possible reference points in current context of education. What kind of changes one witnesses? What kind of changes could be considered as an important benchmark in our own development? Technology, as I pointed out, technology was very limited role to play in the entire teaching learning process. Now, technology is a major game changer in the entire educational scenario, be it governance of institution or part of the teaching and learning. Pandemic has already said, I mean. Set a kind of context for us, that how technology could be an important, inevitable aspect of our education system or teaching learning process. So that could be the second important reference point. Similarly, there could be many. Third could be, for example, if you just take the institution, there was hardly any reference to diversity of a student. If you just see any education institution document 30 years or 40 years back, there is hardly any reference of diversity of a student, because higher educational institution represented the interest of the elite section. The gross enrollment ratio in higher education till the beginning of this century in India was in single digits, perhaps 6% or so. Now, the gross enrollment ratio in higher education is 28.3 or 4. So this is a kind of quantum jump during the last 20 to 24 years, the kind of quantum jump which we can see in gross enrollment ratio. So is it also indicating that our higher educational institutions are getting diversified, and diversity cannot be undermined or eliminated. They need to be addressed. Can we think about institutional development plan without making reference to this? You may recall that in national education policy, already this point has been highlighted, that the diversity management mechanism or policies should be in place, and ideally it should be a part of institutional development plan. So therefore, important reference point could be the changing scenario in education, new demands in education sector, and prepare your institution as per the demand, changing context or needs of the 21st century, rather than sticking to the say last century priorities and engagement. So that is first important reference. But more importantly, if you have to comprehensively think about reference point for your own institution and future defining the future roadmap, you have to take into account national education policy, because this national education policy is one of the most important document which is defining and redefining our priorities in education. It is also setting a kind of roadmap for us to institutional development. Now, India aspires to be a global leader in education, and more specifically in higher education. Definitely, there are also a mandate put before us to align our own institution, which can compete with the
say global standards and others, not immediately, but roadmap should be there. The whole agenda of Viksit Bharat 2047. Definitely, that is one. And in national education policy, it has already been highlighted that by year, by year 2040, education system in India shall second to none. I mean, that the vision is that globally competitive education system of ours. That is there. So therefore, coming back to reference, when we are starting with the exercise of institutional development plan, two references should be taken into account. Generic development in education sector, new demands coming in, the changing context of management and governance of institution. These should be the generic reference point for institutional development plan. The second important reference point, which is more comprehensive, which is all encompassing, that is related to National Education Policy 2020. So national education policy, coming back, all of us have debated, deliberated on the role of national education policy, various aspects of national education policy. But it is again very important to recall. So this is second component. In next 10 minutes or so, I'll just sum up the major aspects that need to be taken into account as per the recommendation of NEP 2020 in our own institutional development. So, national education policy, I consider as a treasure of ideas. So, number of recommendations are there. All those recommendations may not be implemented in a day. It may be a, say, time-taking process. It may take 20 years, 30 years, 40 years. For example, gross enrollment ratio is one example. Gross enrollment ratio, the target we have set for ourselves by year 2035, our gross enrollment ratio should be or it will be 50%. So currently we are having 28.3 or 4% gross enrollment. So nearly, I mean, less than say 100% growth. It may appear unrealistic, but at least a target is given. On a similar line, every institution has to take this kind of call, which the national education policy has set in motion, and we have to act accordingly. So, 4 or 5 areas of interventions would be important, an area of our reference when we are preparing the institutional development plan. First important recommendation I would like to say is transforming the single disciplinary institution into multidisciplinary institution, or in other words, promoting multidisciplinary and holistic learning in the institutional context. I say that as of now, we have nearly or more than 12,000 stand-alone institutions. These institutions in no case can be considered as multidisciplinary institution. How can they promote the idea of multidisciplinary education? They can't. Even institution, very specialized institutions, many deemed to be universities also in the category, they have been created on account of their premier nature and premier, a seminal contribution in the specialized area of engagement. But that cannot be a ground for dismissing the idea of multidisciplinary. All institutions have to be multidisciplinary and promoting multidisciplinary. In this case, since we are talking about institutional development plan, definitely in this case, we have to take into account the idea of multidisciplinary and guidelines of the UGC in this regard. UGC has already issued a document which is referred as transforming single disciplinary institution in multidisciplinary institution. 3 propositions have been given in the guideline. First, if any institution is a single disciplinary institution, they can add departments which are different from their current discipline or current area of engagement. For example, if we are just science college or commerce college or arts college, we have to add such department which can give a
flavor of multidisciplinary institution. So if it is science, Department of Education, Department of Art and Music, and many others can be added in the department. So this will give a flavor of multidisciplinary institution. That is first proposition. Second proposition is merger of institution. If it is single disciplinary institution and unviable in terms of transforming the institution into multidisciplinary institution, the most important reference point in this case could be merging of similar institution, if it is under same management or the government, under government, for example, colleges, if it is under the same government, directorate of education or commissionerate of education, those institutions could be merged. Third proposition, it is also saying that clustering of colleges. If in a particular locality or geographical area, there are different colleges which are single disciplinary institutions, they are not multidisciplinary institution. This idea can work, wherein institution could be grouped. Some time back, almost 2 months back, we in our own institution, seven Australian innovative universities has visited, and I had organized a workshop that the universities are known as innovative university grouping. So, what is the idea? Different institutions are grouped together for resource sharing, for also knowledge sharing and variety of regions. On a similar line, the National Education Policy and guidelines of the UGC has given us opportunity to have cluster of institutions. This can also help in converting single disciplinary, a stand only alone institution into multidisciplinary institution. That is one. Second is holistic learning, which is inbuilt in the idea of multidisciplinary and holistic learning. This is used, simultaneously. So, holistic learning, the idea of holistic learning is to promote this kind of multidisciplinary perspective, multidisciplinary knowledge. So, that can happen and more especially in a multidisciplinary institution. You can draw some kind of conclusion that if institution is a multidisciplinary institution, students admitted in this, they have fair idea about many other aspects. But if students are allowed to opt for a course, now credits, for example, in 4-year undergraduate courses and other, there are courses of ability enhancements, skill enhancement, etc. Those can promote the idea of multidisciplinary and holistic learning. So, therefore, when you are doing your institutional development plan, this aspect has to be taken into account. How this whole your institution will promote the idea of multidisciplinarity and holistic learning in your own institutional context substantively, not as a kind of formal pronouncement that we are multidisciplinary institution. That is one. Second important NEP recommendation is about flexibility. Flexibility and flexible learning experience, promoting flexible learning experiences for the children. A student, for example, there are multiple intervention as a follow of the idea of flexible learning. So flexible learning pathways for a student. So one is 4-year undergraduate course and curriculum framework. That is a kind of follow up of the whole idea of promoting flexibility. So all of you must be implementing in your own respective institution, wherein you have multiple entry, multiple exit options available to this certificate, diploma, and say simple graduate with science, research stream or honors stream. If you are not aware about, you can ask me at the end of my lecture. I can give you this idea. So this is one. Second, the idea of academic bank of credit. So this is really a very innovative idea wherein a student learning experiences cannot be just left aside. It will provide important ground for the student
to creditize each and every learning experience within the institutional framework. So academic credit, idea of academic credit bank or credit bank, that is already in place. So every institution is supposed to open its own account in academic bank of credit. And every student is also supposed to register in the academic bank of credit. If a student has registered, what will happen? If a student has pursued a course, the credit could be accumulated in the academic bank of credit. So this flexibility is say available to the student. If a student is exiting and again entering in any other institution after a gap of 1 year or 2 years, the credit earned in your institution is supposed to be transferred in institution B, wherein a student is getting entry. So this is providing a student in kind of flexibility that now I'm in dire need of earn something for my support my family for due to emergency or due to some other reasons. So just I would not be just pursuing education till my master or PhD is completed. I after pursuing 2 years or 3 years, 1 year, etc., and I have already earned credit, and these credits are already in academic bank of credit. And if these credits are there, there is always a possibility, of course, within a time frame of 7 years or so, I have to re-register, come back to the institution and complete the course. That flexibility has been given to the student. So this is second important reference point. So deliberately I am referring to this because this should include the basic reference point for your own institutional development plan. How do you implement the whole idea of flexibility? Then again, flexibility in terms of assessment and evaluation. So flexible, as of now, most of the time, some 10 years back or so, we are primarily following a process of summative examination or assessment, summative assessment. Now emphasis has shifted that now we should go for continuous, comprehensive, flexible assessment. So the end term examination or annual examination should not only be of measuring the has to be learning formed and multiple ways. For example, you cannot place all the student in a single basket. The student may be having variety of say talents, and those talents have to be tapped. So therefore, you will require a variety of scales of assessment and evaluation. Of course, it will take time, but the idea is a welcome idea. And if you are talking about institutional development plan, that could be really important reference point. Of third important reference point in terms of education policy is enhancement of skills and employability. Just producing unemployable workforce in your own institution could be a major liability in years to come. And therefore, the courses, curriculum, transaction, pedagogy should be as such which can promote the idea of skills and employability. So once your student graduate from your institution, there should be possibility of a smooth transition to the world of work. I'm not referring that whosoever is passing out for your own college or university, he or she would be able to government job only. No, employability could be in variety of ways, employment of variety of kinds, and therefore a student should be able to find his or her own place so far employment is concerned. And you have already provided your own student kind of a skills which is required.
You may not be surprised to know that now the top premier institution in our case, high-rated IITs, high-rated IIM, or other premier institutions, many students are going for a startup. They are not joining the service per se. And many of them have excelled. Many of them are excelling. So the idea, they did not start only with the idea that they will be getting government job. They will be serving in the government sector or even in the corporate sector. They have their own world, which has been opened before them on account of their employability or specific skills. So that need to be taken into account when we are talking about our institutional development plan. Your institution may have a mix of courses and curriculum which can promote generic education and knowledge which can fit into variety of skills. That is one. And also a skill-based specialized knowledge or blending the two. So that should be also taken into account. The fourth important point or fifth important point is creating a research ecosystem. Now, our understanding was that the basic function of college is to provide teaching, or teaching engagement is the primary responsibility. Research is not. Research is the preserve or the area of engagement for the university department rather than colleges. That was our understanding. But if 4-year undergraduate program is in place, and if any student who is studying in your college in the 4th year, if a student is opting for research streams, what is your preparedness? How far your institution is prepared to address this whole issue of, say, research ecosystem within the university system? Have you developed the capability and competency of your teacher to lead the whole idea of research in your own colleges? That is a requirement. And therefore, when you are thinking about institutional development plan, that aspect need to be taken into account. So these are some of these. There could be many other reference points drawing from the National Education Policy 2020. So this, when you start the process of educational development plan, that should be the second important component wherein you can start the whole idea of institutional development. The third important plan that is more practical or applied aspect of institutional development plan. How do we do? So we start this whole steps related to institutional development plan. First of all, we say start with this whole exercise of institutional development plan with SWAG analysis. You just put a piece of paper in front of you wherever you are joining. You please put a piece of paper. You draw row and column. At least 4 columns should be there: strength, weakness, opportunities, and challenge. Left hand side. The second say column could be enabling factors. Fourth column could be inhibiting factor or barriers, and fourth column could be in terms of a strategy to deal with each of these components. So what you do, first of all, you put in place your own institutional data: number of teacher, number of student, courses and curriculum, course programs offered, etc. So every details about your own institution. For example, as you do in case of say SSR, you prepare institutional profile. So institutional level data should be in place once you start this exercise of institutional development plan. So you are aware about your own institution, how many students, what is the streams of pursuance of the courses. For example, if it is about girls, one of the at the global level, this is a concern that girls students are less represented in STEM subjects or STEM institutions. So if you are thinking about multidisciplinary institution, if you are thinking about institutional development plan, you should
place some kind of a space, place some kind of a space for this kind of concern, that you can translate this into say this kind of requirement wherein you can attract more and more girls student in a STEM subject. So that could be there could be a strategy. So that before coming to that, I say that first step of institutional development plan starts with the basic data. The second step is to do a kind of SWOT analysis, analysis of the strength, weakness, opportunities, and challenges. So as I suggested, you just do exercise for, even it is for fun. You just draw that what are the area of strength of your institution. How do you consider your institution as a well-established institution, good institution, premier institution, distinctive institution? So put in a kind of bulleted form that these are the areas of strength. The second column could be that, yes, what are the enabling factors in terms of, say, articulating this whole idea of strength? Third column could be that what are the barriers wherein our strength does not work and exactly get translated into tangible outcome. So that could be the third column. Fourth column is about a strategy. That these are the areas of strength, but are you able to translate the areas of strength into tangible, desirable outcome or not? If you are not able to do that, there should be a strategy how you can resource your own area of, say, competence to translate this kind of area of strength into tangible outcome. That is one. Second, similarly, in a similar line, analysis of weaknesses. What are the weaknesses of your institution? Weakness could be in terms of, say, less number of faculty, infrastructure limitation, human resource limitations, financial constraint, variety of things could be there. And what could be the possible enabling factors which can address this issue, and what are the barriers? And finally, what could be the possible strategy? On a similar line, opportunities. What kind of opportunities are being offered to your own institution in terms of changing context of education system per se, changing priority of education system, changing context of education as a way of implementation of NEP 2020. So a number of opportunities could be in place. So you would also list out those opportunities. And the last column in this regard is a strategy that how you can translate these opportunities into, again, tangible outcome. How to resource those opportunities for your own institutional growth. And finally, what are the challenges which institution is facing, and what could be the possible way out to address this kind of challenges. So this is a kind of analysis you do yourself. This is not individual, again, not individual exercise. The entire, say, stakeholder, maybe representing variety of stakeholders. You may have a core committee which will be representing variety of groups, but consultations should be wider, that how in terms of SWOT analysis. So once you have done SWOT analysis, so you are aware about the strengths, weakness, challenges, and opportunity in respect of your own institution. Then you start that this is the current state of our institution in terms of our baseline data. Baseline data and SWOT analysis, this is the current situation. How we can move forward, how we can progress further, what could be the possible roadmap. So here in your, say, entire job of institutional development plan starts. So there could be various components of institutional development plan. To start with, first would be academic planning. Academic planning would be first. And whichever planning you are doing, definitely the reference point could be NEP 2020, various provisions, UGC guidelines, recommendation, changing, all these are there. So first of all, it can start with the academic planning. Academic planning may have various components.
with regard to programs offered and programs to be offered, proposed to be offered, the courses to be offered, modules to be developed. Even the national education policy also now provides you opportunity to give education in a modular form. So if it is about in modular form, definitely it will have a different kind of engagements. So that is important, say point to remember, and therefore this should be the immediate reference point for all of us to remember the academic planning. One in terms of programs. Program means say BA, BSc or whatever is there. So these are programs. Courses in terms of paper. It could be also modules. If certificate courses are to be offered, courses are to be offered, or diploma programs to be offered, etc. So it is first of all related to programs, course and career, courses, etc. The second part of academic planning could be in terms of courses, a curriculum. So what kind of curriculums are to be, say, developed? Curriculum development will require number of things. The first thing is that idea of multidisciplinarity, not at the level of idea. The idea of multidisciplinarity has to be translated into curriculum framework in terms of courses, in terms of programs. So that should be curriculum should be prepared which represents the idea of multidisciplinarity. Curriculum should be as such which can represent the idea of flexibility, multiple entry and exit. Two examples I would like to cite here. If you have seen the postgraduate, say, master program guidelines of the UGC. Now the UGC has given option that master program would be now each and every in terms of credit. Master program in any higher educational institution must be of 80 credits. 80 credits in 2 years. So if any student is entering in the institution of higher education, but for one reason or other, discontinued after 1 year. So in 1 year, if a student has successfully completed 40 credit course, he or she should be given this whole idea, say idea of this postgraduate diploma in particular say subject, postgraduate diploma in science or whatever is there. So it means curriculum should be developed in such a manner that curriculum is also inclusive of the provision of exiting and entry. So if after completion of 40 credit course at the master level, so it means it is also one of the important aspect could be that courses could be offered in modular form. So that should constitute the part of your academic planning. That is one. Second, in terms of assessment, examination, and various aspects related to academic, that should get reflected as a part of your academic planning. That is one. Second, component of planning could be infrastructure planning. Suppose you have proposed that, and you have also a kind of roadmap that in 20 years you like to develop as a full-fledged university. So definitely infrastructure will be required. And even if it is short-term project, and if you are planning to offer a multidisciplinary master program, multidisciplinary undergraduate program, do you have adequate number of classrooms, lab facilities, library, or many other required infrastructure for a smooth transaction of the course and a smooth running of the course? The infrastructure could be a major limitation in any manner, and that limitation has to be addressed at this level. And therefore, what is required? It is a requisite for you to ensure that infrastructure, what will be the requirement of
infrastructure that should constitute a part of infrastructure planning. So number of classroom, auditorium, library, a studio, digital facilities, number of computer to be provided to the student and faculty. So that could be, of course, digital aspect. I'm keeping it separate. But infrastructure that should be in place. That should include the second component of institutional development plan related to infrastructure. Third important aspect is human resource planning. So human resource planning, all of us would jump on me because I am aware that most of the colleges or universities are in a very difficult position. They do not have adequate number of teachers. They do not have adequate number of qualified teachers to offer variety of courses under the multidisciplinary focus. Suppose if a course is to be offered, I'm specializing in just one area, and so is the case with other colleagues. But the demand is for multidisciplinary courses or ability enhancement, skill enhancement courses. Who will take care of this kind of courses? So therefore, a smooth running of the course, you may require very specialized workforce or the workforce which can handle variety of say priority areas related to course and curriculum. And therefore, what is needed here that in this case, it is also important to say take in a view on this that you need some kind of human resource planning, and the human resource planning should be also aligned with your academic planning and human say infrastructure planning. It is not that suddenly you will ask if it is you are being funded by the government or even by the private management. You have to have more logic and rational for asking for more manpower, etc. So that is one. New recruitment, new manpower, that could be one. There could be also in terms of a kind of idea of clustering, resource sharing, that could be yet another possibility till the time you do not become a kind of capable institution in terms of your own financial or human resource sufficiency. Therefore, in this case, resource sharing could be yet another. So that is the third important component. Fourth important component of institutional development plan is say digital integration. So this digitization is now basic say requirement, and digital integration can take place at two different ways. One in terms of governance processes and practices of governance, which is many times it is also referred as that digital integration can say enable ease of governance. So e office, samarth, and it can also promote accountability, transparency in administration and governance of institutions. So one set of requirement could be in terms of say this kind of say engagement. The second requirement could be also in terms of teaching learning. Now, many universities and institutions may not be able to subscribe, say, hard copy of journal, purchase books, but there could be n number of possibility for e-books, and n number of possibility for e-resources, n number of possibility for open resources. All these resources can be useful for your own students and faculty. And what is requirement? You require adequate digital facility, digital infrastructure to take care of this kind of say resources. Second, even in this case of say teaching learning process, the whole digital say tools can be enabling kind of provision for
say more informed teaching learning process. So herein what you find that teaching learning phase may happen in case the way we are interacting. Of course, I understand that this medium has apparent limitations, but despite this, I'm able to reach out to so many people. For example, today the entire first half I joined in a very important program that was, of course, related to international conference. So that was also a kind of opportunity. And I'm also interacting with you. It was not possible if the HRTC or MMTTC, Sant Baba Gadge University would have invited me in physical mode. It might not have been possible. I could have taken a strong decision whether I'll be going to this institution or still doing this. So here in within the same day, I could manage both. So the technology should not essentially be treated as a barrier. It can also be enabler. The basic idea is how do we use technology, whether we are using technology as enablers or a kind of barriers. That will depend on us. So, but anyway, digital facilities, creation of digital facilities to the extent of offering blended mode courses and curriculum modules. There could be possibility of online courses to be offered by your own institution. It could be also in modular form. Even if you are offering a 2, 3, 4 credit course, there could be possibility of, if it is accredited, if it is certified, that the many students may be opting for your course, and they after they complete your course 4 credit or 2 credit, that the credit could be say accumulated in academic bank of credit, and wherever they are pursuing their course, they can redeem this credit. So this kind of flexibility on the one hand, and also opportunity to use variety of resources. SWAM courses, if it is certified by the university, that can be also opted for. For doing this kind of exercise, definitely you need capability in terms of digital integration in your own institutional life, be it process of governance or teaching learning process. That is very important. So again, research ecosystem and others I already talked about. So these are the possible component, a specific program and possibilities for enhancing and linking your institution to the world of work, or better linkage between your institution and industry. That would, because now focus is on this while a student are pursuing degree, so the principal should work as earn while learn. So this can not happen in case of your own institution unless you link the student to the industry or prospective employer, etc. So that should be inbuilt part of your institutional development plan. So this is second very important aspect of institutional development plan. So just to repeat, applied aspect. First of all, you be ready with your basic institutional data. Second exercise you do in terms of SWOT analysis of your own institution. Third, based on SWOT analysis and institutional data or baseline data analysis, you define your own roadmap. And here in your institutional development plan, exercise starts. And this exercise start with various kinds of intervention. You can just subdivide, but these are basic, enablers, and UGC has already come up with the concept of enablers. 8 enablers they have already talked about, academic and others, research, innovation. It could be also in terms of IPR, technology, financial resources or financial management, which I missed. That could be 8 another component. So once you are thorough with this kind of component of institutional development part, based on base analysis of data, and also SWOT analysis, you plan in this way. When you are planning this say exercise, it is also important now to come back to your own institutional vision and mission. What is the vision and mission of your institution? Whether the vision and mission of your institution
by and large, vision and mission of institution will remain almost the same. But you can revisit. Is there any possibility of, say, uh, revisiting your vision and mission of your institution? Is there a possibility of modification in terms of vision and mission of, say your institution, align with the changing times, align with the new demands in the education sector? That is also possible a way of doing this. So this is yet another. Then implementation comes, the next stage. So what you do for implementation, whatever you have defined your roadmap. So this roadmap has to be in terms of number of years, and therefore you have short-term plan, medium-term plan, and long-term plan. So you define that in next 3 years what you would like to do on all these fronts, finance or academic, etc. Then in medium term, maybe 8 years or so, what will be your plan? And finally, long-term plan. What is your long-term plan? And accordingly, you align each of the component of institutional development plan. So this, long-term, short-term, and medium-term could also take into account action and a strategy to implement this kind of, what will be the strategy, what will be the action point. So you have to define those action points, that in 3 years I'll be doing this, in next 5 years, etc. And then you put in place, once your document is in place, what is needed, continuous monitoring, implementation and monitoring of institutional development plan. So continuous evaluation should take place, how this institutional development plan is being implemented for the benefit of the institution, which can lead to institutional excellence. So implementation by a committee, evaluation or monitoring and evaluation, whatever interventions you have defined for your own institution. And finally, if evaluation has been done, implementation has been examined, there could be a gap between envisioned document or a plan and its actual implementation at the departmental level, institutional level, etc. There could be possibility of course of correction. And the course of correction would necessitate that you must have some kind of a strategy. If something has not worked, what could be alternative, say, way to addressing a specific concern? So in broadly, these are some of the important aspects related to institutional development plan. As I understand that these are, whatever I spoke, that the scope is very vast, very large. Thus, in my own deliberation, just I given you a kind of hint that what should be done, how it starts. But when it comes to actual exercise of institutional development plan, it could be a time-taking exercise, and it must follow a kind of consultative process. If you would have been a kind of face-to-face manner program, I could have given you exercise, and you can also provided us time in a day or two to do some kind of exercise of institutional development plan. And you, all of you, as a teacher of your respective institution, even if you are not institutional leader, you could have, you can play very important role in ensuring institutional improvement and excellence. So this is the idea which I wanted to share. I hope I have been able to communicate whatever I thought relevant to communicate within 90 minutes time. And now that is from my side. If you have any clarification to seek, any question to ask, any comment to make, you feel free. And the organizers may say take note of the questions and others. You can raise your hand, you can ask question or seek clarification. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you so much for such an insightful and wonderful session towards this institutional development plan. Friends, the forum is open for discussion. If you have any queries or the question, you can directly ask to Professor Kumar Suresh. Please, anyone. Meanwhile, sir, I will see if there are some questions on the YouTube, that will take some.
If you have any question to ask, feel free to ask Please, the anyone. question. If you Sir, do one not question. ask any question, I can take. Ah, Sir, yes, yes. one question on the YouTube, sir. Is this IDP is aligned with the goal of Vikasit Bharat or the goal of sustainable development? Is this kind of that? This is a question from YouTube, sir. Very important question has been raised. In fact, whenever we are talking about institutional development plan, if you recall, initially I said that when we start this whole exercise of institutional development plan, definitely sustainability is the most important aspect. It is not just about pursuing a course or curriculum. It is also about sustainability, concern about climate, concern about our common future for the humankind. If you just say Google, you'll be able to come across a document of UNESCO, Future of Education. And in this document, major emphasis has been paid on sustainability. Sustainability as a general concern, and also sustainability in terms of education. How sustainability could be an integral part of education and educational process. So whenever you are talking about institutional development part, you cannot just dismiss this whole idea of sustainability, especially I'm talking about sustainability, all the goals, 17 goals of SDG, I mean, sustainable development. Though till now we have been just talking about SDG 4, but now focus is on all sustainable development goals, so constitute an important aspect of education, and all the educational institution must try to answer and integrate in the institutional development plan. So, as I said, that there are generic references which should be taken into account. Development in recent decades, recent years, that should be inform the idea of institutional development plan. So, from that perspective, SDG, sustainable goal, is obviously important reference point. Similarly, the other point, I forget the other point, but again, this is equally important. So it is not limiting that whatever point I discuss, that would exclude other concerns, all the concerns which are shaping the future of education, that should be taken into account when we are developing the plan of institution development, and that should be definitely taken into account. Thank you, sir. Thank you so much. If you could permit, can we conclude, sir? Because I think there is no Okay, more thank you. question. Yeah. So, Thank you. Thank you. on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, and Dr. Babasaheb Naik College of Engineering and Technology, we extend our sincere gratitude towards Professor Kumar Suresh sir, for being with us, enlighten us, and gives us a very important concept of this institutional development plan. So definitely, sir, institutions like us, it is really important that whenever we are developing these plans, because we are working in the some core and diverse area, and there are a number of challenges, because some rural institutes are there, some aspirational districts and blocks belong to our region of our university. So in such case, this you have whatever maybe the suggestions you have put here, definitely that will be work for while we are preparing our IDP in terms of our sustainability. So we are really thankful to you, sir, for your thought-provoking session and the insightful towards this IDP. And once again, I extend my sincere gratitude to you, and with the kind consent of Professor Suresh sir, I would like to declare that this session will be over here, and we will continue for the next session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Okay, so participants, within couple of minutes, 1 or 2 minutes, we will continue for our next session. We're waiting for our guest. He's joining within 1 minute.
As far as concerned with the next session, I would like to request the participant to open their videos. Bedre sir, good afternoon. Participants, kindly open your videos. Very good afternoon. Sir, shall we start, sir? Sure. Good afternoon. So, good afternoon, one and all, once again. Sir, briefly, I will give the introduction of this batch. So, we have launched this program in collaboration with our one of top leading engineering institution, Dr. Babasaheb Naik College of Engineering and Technology, situated in the Pusarod district, Yavatmal. And Professor Avinash Wankhede sir is the principal of that college, and he is today with us. So, Wankhede sir, I extend my gratitude to you for to this session. Welcome, heartfelt. Friends, as we have already discussed, this session, today's session, we have divided into two different parts. First part we have covered with the one of the eminent expert that is called from the NEPA on the institutional development plan, and now we are going towards the another part of this session. That is one of the important and the crucial vertical of this national education policy. That's multidisciplinary and holistic education. Friends, you know that this national education policy has shaping in a various dimensions, and this concept of multidisciplinary education is very important in the this policy. Therefore, we are and UGC therefore has includes this theme in this flagship program. So we are going to discuss in the today's session, particularly this session on this important vertical of this national education policy, that is multidisciplinary holistic education, with the help of one of the renowned expert, Professor Bedre sir. Sir, I extend my warm welcome to you to this session. Friends, Professor Bedre sir is at present serving as a professor and the director at Dr. Hari Singh at Malvi Mission Teacher Training Center, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Central University, situated in the Sagar, Madhya Pradesh. I will not go for the brief introduction, as we are being the MMTTC families serving all of you know that, because most of the you have completed some courses at Sagar MMTTC, and you know Professor Bedre sir very well. But friends, we being a MMTTC family, we are continuously engaged in the mission of this awareness and sensitization of national education policy, and we are trying to reach out each and every faculty across the country. So such kind of programs is very well addressed in each part of our region. Not only each part of our region, we are trying to collaborate and connect with each colleges and each faculty members to aware and sensitize towards the implementation of this national education policy. So sir, I again extend my warm welcome to you and request you to start with your session. So please. Thank you very much. I hope I'm audible. Very much clear, sir. Thank you. ठाकुर साहब, जब मैं आपको सुन रहा था तो मेरे बचपन में हमने जो एड देखते थे उसकी याद आ रही थी. शायद वानखेड़े साहब को भी थोड़ी सी याद आती होगी. आप कुछ लेते क्यों नहीं? क्या बात करते करते खाते रहे थे. तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट कुछ लीजिए, कुछ दवा दारू लीजिए ताकि आपके गले को आराम मिल सके. एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ठाकुर साहब, आपके डायरेक्टर साहब प्रोफेसर मोहम्मद आतिक साहब, और जिस प्रेस्टिजियस कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करके ये एनईपी ओरिएंटेशन तथा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अविनाश वानखेड़े जी. मैं ये कहूंगा कि निरंजन टकले जी आपके जैसे दिखते हैं सर. यूट्यूबर जो है, ये नहीं कहूंगा कि आप उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन आप वो आपकी तरह देखते हैं. तो द मोमेंट आई सॉ योर फेस, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड how this person is here. Anyway, and my dear participants who have joined over here in this venture. जैसे कि ठाकुर साहब ने आपको कहा कि why these programs are being organized. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. We are organizing this program, that's okay.
दैट इज द फैक्ट। लेकिन उससे पहले एक सवाल बनता है कि व्हाई आर वी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम? क्योंकि मैं जा रहा हूँ नागपुर, लेकिन क्यों जा रहा हूँ नागपुर मुझे पता नहीं। बस सब जा रहे हैं, गाड़ी लगी है, मेरी किस्मत अच्छी कि कुंभ के चलते भी मुझे जगह मिली है, तो इसलिए मैं नागपुर नहीं जाऊंगा कि मेरा वहीं कुछ काम होना चाहिए। तो सिमिलरली MMTTC Amravati is organizing this program. Your principal, sir, and the management have entered into collaboration, and the slots are available. Therefore, you are attending the program. That will not work. That will not work, or that will not serve any purpose there. So, first of all, we have to know very well. हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों ये उटक बटक चल रही है इधर? इसके साथ भागो, उसके साथ भागो, ये करो, दूसरा पर्सन पकड़ो, उनका वक्त ले लो, पार्टिसिपेंट को जोड़ो, वो कुछ करते कि नहीं देख लो। व्हाई आफ्टर ऑल, व्हाई दिस वेरी फ्रेंडली? एंड द सिंपल रीजन इज दैट कि यूजीसी ये चाहती है कि हमारे देश में जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लगभग 15,96,000 टीचर्स हैं। अराउंड रफली हम कहते हैं 15 लाख टीचर्स है, बट इन 21-22 दोज वेर 15,96,000। हो सकता है कि आज के डेट में बढ़ गए हो। आप कहोगे कि बढ़ कैसे जाएंगे, रिक्रूटमेंट तो है नहीं, है ना? हमारे सामने सबसे पहला ये सवाल आता है कि भाई रिक्रूटमेंट तो है नहीं, तो बढ़ कैसे जाएंगे? रिक्रूटमेंट एडेड कॉलेज में बढ़ रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी संख्या बढ़ रही है। नेचुरली वहां स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, वहां टीचर्स की भी संख्या बढ़ रही है। अब ये नहीं कह रहा है कि वो किस प्रकार के टीचर है। When I say 15,96,000 of the year 21-22, I include here all kinds of teachers working in the higher education sector. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, द सेम वर्किंग इन कॉलेजेस, मे बी ऑन एडेड बेसिस, मे बी ऑन अनएडेड बेसिस, मे बी ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस, मे बी डेमोन्स्ट्रेटर्स, मे बी ट्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ओबीसी, एससी, एसटी, फलाना फलाना ढिकाना सब कुछ मिला के 21-22 में ये 15,96,000 ये हमारा टीचर्स का नंबर है। और इतने सारे लोगों को एनईपी को लेकर ओरिएंट करने का, सेंसिटाइज करने का जिम्मा 3 साल के लिए इन सारे एमएमटीटीस को सौंपा गया है, और उसके तहत मिशन मोड में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, उसका कारण ये है। अब थोड़ा उसके पीछे जाते हैं। Why the UGC decided to undertake this mission? The reason is very clear and all of you will agree with me कि भाई बनाने वाले ने पॉलिसी बनाई, जो भी 10, 20, 50 लोग थे उन्होंने बनाई। यूजीसी में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने रेगुलेशन निकाले, सब कुछ निकाला, यूनिवर्सिटी के पास भेज दिया। कुछ गवर्नमेंट के पास गया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, कुछ यूनियन टेरिटरी के पास गया। अब वो आगे बढ़ता रहा है। आप देख लेना, वन सेंटेंस इज ऑफन सेड कि हमारा केंद्र बिंदु विद्यार्थी है ना। हम जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी सेक्रेटरी हो, तो क्या कहते हैं कि हमारा केंद्र बिंदु, हमारा बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स in 21-22 are 4,33 lakhs. Now, by following any means, no ministry, no government, no agency can reach to this number of students regarding NEP 2020.
कदम साहेब त्यांनी ठरवलं जरी की इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचायचं, इतक्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, it is not possible for anybody to reach out to these 4 crore 33 lakh students. So what they found? They realized that the real responsibility of implementing NEP is on the shoulders of the teachers. And let me tell you one more thing. Only we people are there who are connecting all people together. बाकी जो stakeholders हैं, student हो या फिर सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो या फिर बाकी जो भी सेक्टर है, मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें हो, they are beyond the reach of the government. Please remember. मान लीजिए किसी मैनेजमेंट में कोई गलती भी की तो गवर्नमेंट कैनॉट डायरेक्टली पनिश दे, और गवर्नमेंट कैनॉट पनिश एनी स्टूडेंट डायरेक्टली. फाइनली वी आर द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल, हु आर कमिटेड देयर. हम बंधे हैं किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से सीधी तरह बंधे हैं. तो यूजीसी ने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 4 crore 33 lakhs students, we should go to this 15,96,000 teachers, because on the crux, on these teachers, the entire setup of higher education is based, is relying. उसका पिवट हम कहेंगे, जिसपे सारा बोझ, जिसपे सारा डॉलर हम मराठी में कहते हैं, अगर वो रेस्टेड है तो हम टीचर्स हैं. So they decided to train the trainers. We are the trainers. In that sense, teacher. तो हम सारे लोगों से कनेक्टेड हैं. हम कॉलेज से कनेक्टेड हैं, हम यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, हम मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं, हम स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, हम पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं. तो हम सब लोगों की अहमियत पहचान कर यूजीसी ने डिसाइड किया कि इन लोगों को ट्रेन करना जरूरी है. इट अंडरलाइंस आवर इंपॉर्टेंस in the plan, in the mission of implementing NEP 2020. This is the foundation of this course. Shinde sir, is it okay now? This is the foundation of this course. इसलिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं. अब बात आती है कि एनईपी को लेकर ओरिएंट करना मतलब करना क्या है. एनईपी हम जाप तो नहीं कर सकते ना. 108 बार करो, 1008 बार करो, समथिंग लाइक दैट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो तो नहीं हो सकता. हम उसको रटना तो है नहीं. We have to understand it. Then when I say we have to understand it, it means we have to see what major ideas are there, what major components are there, what major parts are there, and then, or I should say, what goals are set there. आखिर ये पॉलिसी करना क्या चाहती है, आखिर किस प्रकार का बदलाव लाना चाहती है. आखिर कई बार ये सवाल आता है कि पॉलिसी किस प्रकार का स्टूडेंट बनाना चाहती है. उसका एक पॉलिटिकल आंसर बहुत डिफरेंट है, लेकिन उसका रियलिस्टिक आंसर बहुत मतलब सटीक है. उसके तरफ मैं नहीं जाऊंगा. सो व्हाट मेजर चेंजेस it plans to bring? That is one question. Second, how it wants to bring those changes. And third thing that will be, what may be the possible challenges in the way of bringing those things. तो जब मैंने पहला सवाल उठाया कि what possible changes it wants to bring, और उसमें यूजीसी ने लगभग 8 to 10 मेजर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये हमें करना है. फॉर एग्जांपल, वी वांट टू ब्रिंग होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. वन थिंग. सेकंड थिंग, वी वांट टू रिवाइव आईकेएस, राइट. थर्ड, वी वांट टू गिव मोमेंटम to research and development. Third, we want to bring use of ICT. We want to develop skills. है ना? We want to see
what connection higher education has got with society, and at the same time, how the higher education is governed, what this leadership is there. So these are some 8 major areas on which you are supposed to get sensitized. इन 8 बिंदुओं को लेकर यूजीसी ने इन सारे सेंटर को कहा है कि आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। उसमें से जो बिंदु मुझे दिया गया है आतिक साहब ने, दैट इज होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। कहने के लिए तो ये 2 वर्ड है, ठाकुर साहब जरा इनको म्यूट करिए, थैंक यू। किसी को म्यूट करना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन वी हैव टू एनीवे। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हाँ, सो कहने के लिए तो ये वर्ड 2 अलग अलग है, होलिस्टिक एजुकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, बट प्लीज रिमेंबर हियर holistic education is the prime objective of this policy. And when it comes how to offer this holistic education, then comes multidisciplinary. Kyunki in the present setup, in the present education setup, we cannot give holistic education to the student within the single stream, within the single faculty, within the single discipline. Therefore, the multidisciplinarity comes there. कहने का मतलब ये है कि होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जाने के लिए उसकी पहली सीढ़ी है multidisciplinary education. Is it clear now? Now let me share my screen with you so that the things will become clearer. आप मुझे ये भी बताते चलना कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ हो रही है ना? यस सर, हो चुकी है सर। थैंक यू। यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही सर। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं यहाँ कि फॉर दिस पॉलिसी और फॉर द पॉलिसी मेकर्स आई शुड से, उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए या हमारे लिए, मैं कह रहा हूं उनके लिए होलिस्टिक एजुकेशन मीन्स द इंडिजिनियस मॉडल ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, फॉर द NEP 2020 the meaning of the holistic education is the education of ancient India, or in other words our indigenous education. Indigenous मतलब क्या सर? हमारा अपना देसी मॉडल। अब उसका अपोजिट क्या होता है? देसी मॉडल का अपोजिट क्या होता है? विदेशी मॉडल। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग मेरे सामने जो रजनी भोयर मैडम है, पंकज जी हैं, वो थोड़े अपने कैमरा ऑन रखे कम से कम कुछ लोग, so that I will be able to see you. मेरे ख्याल से दीपक जी का कैमरा ऑन है, राइट दीपक जी? नो, इट इज इज फोटो। किसी का कैमरा ऑन है? यस सर, अभय गायकवाड़ सर इज देयर। 1 मिनट, मुझे थोड़ा, मैं इसको जरा ऊपर ले रहा हूँ ताकि मैं इनको देख सकूं। पता नहीं सर, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, सर राइट नाउ इट इज पॉसिबल, आई हैव पिन इन। यस, चलो कोई बात नहीं, जो भी मेरे सामने है। अब मुझे ये समझ के चलना पड़ेगा कि these people are with me. Yes, अभय गायकवाड़ जी कैमरा इज ऑन, शिंदे साहब का, लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रेजेंटेशन निकल जाता है। एनीवे, कोई और ऑप्शन है सर जहां मैं आपको भी देख सकूं? और ना, वही आ रहा है। चलो एनीवे, आप मुझे बस हाँ हाँ कहते रहना ताकि चीजें मेरे लिए आसान। एनीवे,
1 minute, just 1 minute. Okay. Is it visible to you? Right. तो जब मैं से कह रहा था कि for this policy makers, the meaning of the word holistic education is the ancient Indian education model. अब सवाल ये आता है कि जो चीज 1000 पहले गुजर चुकी है, मैं आपको ये भी बता दूं, अरे क्या यार सर दिक्कत हो रही है Sir, can you show in PPT mode, sir? 1 minute, 1 minute. आपको स्लाइड शो चाहिए? Yes. One minute. Is it okay now? No, sir. Not in. No, it is now full screen is there. Full screen. मेरे सामने. हाँ. Is it visible or not? Yes, sir. Visible, sir. Please continue. Visible. Okay. Visible. Thank you. तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि for these policy makers, 1 minute, ये आप आगे पीछे हो जाएगा. हाँ. For these policy makers, indigenous education means the education that was offered in India some 1000 years ago. क्योंकि इन पॉलिसी मेकर्स की जो परिभाषा है एंशिएंट इंडिया की या भारतीय ज्ञान परंपरा की या इंडिजिनस मॉडल की, वो ईस्वी सन के 11वें 12वें शताब्दी में ही खत्म हो जाती है. फॉर देम द colonial period begins with the beginning of the Islamic rulers in India. आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मतलब जो 1000 साल पहले था या 1000 साल तक था वो इंडिजिनियस है और उसको रिवाइव करने की बात ये पॉलिसी करती है. Now I am looking at the things from the third person's view now. I am neither with it or against it. Please remember, मैं इसके साथ भी नहीं हूं, इसके आगे भी नहीं हूं. जो चीज आपके सामने है उसको रखने का प्रयास करो. So the question remains here, question appears here, why we are insisting or why the policy is insisting on the revival of indigenous education. फिर एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि for this policy makers, holistic education is their target, is their goal, prime objective, और उसके लिए मल्टीडिसिप्लिनरिटी है. अब सवाल बनता है कि होलिस्टिक एजुकेशन मतलब क्या है? According to them, our ancient education system used to offer holistic knowledge of life to the learners. तो वो होलिस्टिक एजुकेशन इनको चाहिए या वो लाना चाहते हैं. अब सवाल बनता है व्हाई, क्यों लाना चाहते हैं? आप में से कोई, आप तो सारे इंजीनियरिंग के हैं, आप में से कोई पूछ सकता है मुझे कि भाई 1000 साल पहले जो चीज गुजर चुकी है, जो अब नहीं है हमारे सामने किसी भी फॉर्म में, उसको हम क्यों रिवाइव करें? Please remember, there are some objectives behind bringing this indigenous education in the present time. और क्या कारण है? यहाँ जो कुछ 1-2 कारण मैंने यहाँ काउंट किए हैं, गिनाए. एक, ये पॉलिसी कहती है, मैंने यहाँ पीरियड
200 साल लिखा है. The policy says our ancient education system was removed during the colonial period. एक मिनट, मुझे कोई तो दिखे यार मुझे. चलो, some people are there. So, since the colonization began, or the moment colonization began, our ancient education system was put aside. It was gone. So, we are continuing that colonial legacy or colonial model of education. अब देखो, एक वर्ड कॉलोनियल थोड़ा सा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है. आप सारे लोग इंजीनियरिंग से हैं, तो हो सकता है कि आपका वास्ता शायद हिस्ट्री से ज्यादा ना पड़ा हो, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. हम उनकी एक कॉलोनी थे, वो हम पे राज करते थे और हमारे ऊपर लंबे समय तक राज करने के लिए ब्रिटिश पावर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ यूरोपियन एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया. आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर. यस. यस सर. मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट ही करता हूँ थोड़ा सा तक, क्योंकि मैं आपको भी देखना चाह रहा हूँ और इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे. 1 मिनट. ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. इट विल नॉट वर्क. चलो कोई बात नहीं. सो द पॉलिसी ऑन पेपर सेज कि फॉर 200 years और more or less, British power ruled India. And the British power entered every walks of our life. हमारे शिक्षा में उन्होंने प्रवेश कर लिया, हमारे संस्कृति में कर लिया, हमारे खान पान में कर लिया, हमारे सोच में कर लिया, एवरीवेयर. और उसका नतीजा ये हुआ, उसका साइड इफेक्ट या कहूंगा मैं उसका कि बैड इफेक्ट ये हुआ कि we forgot our past. We didn't know or we don't know what was the system there before the Islamic invasions took place in India and later on Europeans came in India. तो ये जो सारी चीजें दूर तक या गहराई तक मतलब एंटर कर चुकी हैं, उसको हटाने के लिए इनको इंडिजिनस एजुकेशन लाना है. दूसरी बात, जैसे कि आपको शायद एक नाम आपने बार बार सुना होगा. एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कुछ करने दीजिए. 1 मिनट, दिक्कत हो रही है मेरे लिए कुछ. 1 मिनट. आर यू देयर? यस सर. यस सर. मैं आपको क्यों नहीं देख पा रहा फिर अभी? हाँ, यस. चलो, एनीवे, मैं थोड़ा सी बात करता हूँ ताकि आपको बाद में पता चलेगा. हमने एक नाम हमने कई बार सुना है, पर्टिकुलरली जो भी थोड़ा हिस्ट्री से वास्ता रखते हैं, उन्होंने एक नाम सुना है, दैट इज लॉर्ड मैकाले. लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है ना हमने? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसने यूरोपियन शिक्षा को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया. उसने क्या किया फिर? यहाँ जो भी पढ़ाया लिखाया जाता था शुरू में, बाद में जो भी पढ़ाया लिखाया जाता उसको हटाकर सारे यूरोपियन साइंसेस, यूरोपियन सोशल साइंसेस एंड यूरोपियन लिटरेचर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया. उसका नतीजा ये हुआ पिछले 200 सालों में कि हम अपना पूरा अतीत भूल गए. कल्चरल एमनेसिया, कल्चरल एमनेसिया, हम भूल गए सारी चीज. और फिर हर एक चीज में हम
यूरोपियन साइंस से परिचित थे। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूं कि पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर कौन है या फादर कौन है, तो मुझे सवाल जवाब आता है एरिस्टोटल। अगर मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो मुझे जवाब आता है एडम स्मिथ। व्हाई इट हैपेंस? It happens because for last 200 years we are taught that Adam Smith introduced economics. मुझे कहा जाता है कि अरिस्टोटल फ्रॉम ग्रीक इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल साइंस। मुझे बताया गया है कि हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, अगस्टान इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। So you can take any branch of learning, you will find that some European person. तो होता है क्या, उसका रिजल्ट क्या हो कि हम सब कुछ उसके बारे में जानते हैं, हमारे पास्ट के बारे में नहीं जानते। सो फॉर दैट पर्पज इंडिजिनियस एजुकेशन। वन मोर थिंग कि व्हाट हैपेंड बिफोर दैट इज अननोन टू अस। एडम स्मिथ के बारे में हमने कब पढ़ना शुरू किया? 1850-60 के बाद। उससे पहले हम एडम स्मिथ को नहीं जानते। शेक्सपियर को भी हमने 18वीं शताब्दी में जानना शुरू किया, उससे पहले हम नहीं जानते। तो ये जो कॉलोनियल इम्पैक्ट हमारे करिकुला में आ चुका है, हमारी सोच में आ चुका है। अब सोच के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ मेरे पास उतना समय नहीं, मैं आपको एक कोट बताता हूँ मैकॉले का। वो मैकॉले कहता है कि मैं यूरोपियन एजुकेशन इसलिए लाना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा क्लास पैदा करना चाहता हूँ, जो क्लास इंग्लिश पावर में और आम जनता में एक मेडिएटर का काम करे, एक इंटरप्रेटर का काम करे। और दूसरी और वो आगे जाके कहता है कि आई वांट टू क्रिएट और वी वांट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ क्लास, अ क्लास ऑफ who will be Indian in blood and color, but they will be English in taste, in opinions, in morals and in intellect. इसका रिजल्ट उसने अपना पूरा पर्पस सर्व कर लिया। ऐसी शिक्षा दी कि हम उसको पढ़कर ये समझने लगे भी यूरोप का है, जो भी इंग्लैंड का है वो अच्छा है, और जो भी हमारा हिंदुस्तान का है वो उतना अच्छा है। See, because of the 200-year long colonial rule in India, we began to imitate them. We began to ape them. हम बंदर के जैसे बिना सोचे समझे उनको कॉपी करने लगे। अब देखो, अब ये फरवरी है और फरवरी से इतनी मतलब कड़क धूप अब आने लगी है, गर्म होने लगी। लेकिन फिर भी देखना कि हमारे यहाँ जब शादी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ होती है शादियां हमारे यहाँ, तो देख लेना हमारे इतने गर्मी में भी हमारे दूल्हे किस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं। दैट इज एंटर डीप इनटू आवर माइंड। हम सोचते भी उनकी तरह है। अगर कोई चीज बाहर से आती है तो हम उसको अच्छा मानने लगते हैं, जो चीज हमारे अपनी है वो हमारे लिए उतनी अच्छी है ही नहीं। सो दैट इज द पॉइंट हियर। एक मिनट, उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूं। मैं सीधा लास्ट पेज पे आ गया। सो हमारी सोच भी उस प्रकार की है, जो भी चीज बाहर से आती है हम उसको अच्छा मानते हैं, और हमारे खाने में, हमारे रहने में, हमारे दिखने में हम सब कुछ उनकी तरह करते हैं। तो उसको हटाने के लिए, जो हमारे माइंड पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उसको हटाने के लिए ये इंडिजिनियस एजुकेशन लाता। सेकंड ऑब्जेक्टिव, to regain the lost status of Vishnu.
अब मैं इसको लेकर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ये कह सकता हूं आपके लिए कि here the policy makers think that once upon a time in past, before the Muslim invaders came here, or I should say Islamic invaders came here, before the British came here, India was Vishwa. Am I right? India was Vishwa Guru. या फिर अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो इंडिया का डंका उस वक्त सारे विश्व में बजता था, हमारी साख उस प्रकार थी। तो वंस अपॉन अ टाइम वी वर विश्व गुरु टू वर्ल्ड। दुनिया को चीजें हम सिखाते थे, दुनिया हमसे सारी चीजें सीखती थी। आपको याद होगा शायद शायद मेरे उम्र के शायद प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने वो मनोज कुमार की मूवी देखी होगी, पूर्व और पश्चिम। मनकेट साहब आपने देखी? कि दुनिया को गिनती हमने सिखाई, शून्य का शोध हमने लगाया है, जीरो का संशोधन हमने किया है। या फिर चांद तारों की बात हम कई साल ब्रिटिश के मतलब यूरोपियन लोगों से पहले करते थे। हमारे यहाँ जो नक्षत्र है उन्हीं के नाम ऐसे नहीं पड़े हैं, हमारे पास जो ग्रह है उसी के नाम ऐसे नहीं पड़े। लॉन्ग बिफोर यूरोपियंस thought about that, we had gone far ahead. यूरोपियन लोगों ने इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करने से पहले ही हम काफी दूर तक निकल चुके थे, हमने उनके बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो दुनिया को ये सारी चीजें हमने सिखाई, हमने दी है। योगा हमने दिया है, आयुष हमने दिया है, मैथमेटिक्स में हम फॉरवर्ड थे, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में हम फॉरवर्ड थे। तो वंस अपॉन अ टाइम वी वर विश्व गुरु, लेकिन इस्लामिक इन्वेजन के चलते और बाद में यूरोपियन रूल के चलते हम ये सारी चीजें भूल चुके हैं। वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो होलिस्टिक था, वो इंडिजिनियस था। अगर हम उसको फिर एक बार लाते हैं, अगर हम उसको फिर बार पढ़ते हैं, तो फिर हम अपना खोया हुआ जो स्थान है, हमारा जो खोया हुआ जो स्टेटस है विश्व गुरु का, हम उसको पालेंगे। फॉर दैट पर्पस दिस इंडिजिनियस एजुकेशन इज देयर। नाउ लेट मी मूव ऑनवर्ड। 1 मिनट। अब सवाल आता है हाउ टू ब्रेक इट। चलो, हमने ये तो सोच लिया कि हमें इंडिजिनियस एजुकेशन क्यों लाना है। हाउ टू ब्रेक इट, कैसे लाएंगे, इसका भी रास्ता इस पॉलिसी में बताया गया। कि जो एक बात तो पक्की हुई कि हमें कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को हटाना है और उसकी जगह हमें हमारा एशियंट एजुकेशन सिस्टम लानी है, या वो शिक्षा लानी है जो होलिस्टिक एजुकेशन देती थी, होलिस्टिक अप्रोच देती थी। आई थिंक इन मराठी वी कॉल सर्वांगी, सर्वांगी नॉट सर्वकश। सो वी वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। फिर सवाल बनता है हाउ टू ब्रिंग दिस होलिस्टिक एजुकेशन टुडे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग द पॉलिसी सेज, आपने कहीं पढ़ा भी होगा शायद, उसमें लगभग इस पॉलिसी में 66 पेजेस है, उसमें ज्यादा नहीं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है इसको, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, तो ओनली 66 पेजेस आते हैं। और उसमें से मैं आपको बताऊं कि 33 पेजेस आर गिवन टू स्कूल एजुकेशन और 33 to 51, मतलब सिर्फ 18 पेजेस में कहूंगा आपसे, 18 या 19 पेजेस
उच्च शिक्षा के बारे में है, और बाकी फिर अदर के एस्पेक्ट के लिए बचे हुए मेरे ख्याल से 15 पेज दिए। तो इसमें कई बार लिखा है, या कई बार तो इतना कैटेगरी लिख के लिखा है कि वी वांट टू मॉडल our present day universities and colleges on the line of Nalanda, Takshashila, Vallabi, Vikramshila and other universities of past. बीच बीच में अगर मुझे कोई टोके तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपके साथ हूं, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो चुका। हाँ हेलो तो करते रहना, कम से कम मेश्राम साहब आप खांसते रहना ताकि मुझे पता चलेगा कि आई एम विद यू। हाँ ठीक है। तो ये पॉलिसी कहती है कि आज के जो हमारे विश्वविद्यालय या कॉलेजेस हैं वो स्पेशलाइजेशन के नाम पे लिमिटेड शिक्षा देते हैं। जैसे कि इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वी ओनली टॉक अबाउट लिटरेचर एंड सोशल साइंसेस, इन द फैकल्टी ऑफ साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्योर साइंसेस, in the faculty of commerce we are talking about business and economics only. So we are going in one direction only, we are offering only one-sided education to the students. Lekin this one-sided education will not help him in the long run, it will not make him a complete man, I should say, man, woman, whatever you say, or it does not give him the holistic knowledge of life. इसका मतलब according to the policy, the present education system, which is the Western one, which is the European one, is not good for anything. मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमारे पास हिंदुस्तान के 3 पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए गए 1858-57-58 में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, उस समय जब ये विश्वविद्यालय बनाए गए तब उनके सामने मॉडल था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन उस टाइम में कैसे चलती थी कि भाई यूनिवर्सिटी विल बी एट द सेंट्रल पॉइंट एंड देयर विल बी एफिलिएटिंग कॉलेजेस एंड द एजुकेशन विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन, different faculties, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, this one, that one, and so on. So this is the European model, and this European model does not give you holistic education. So according to these policy makers, our ancient education system used to give holistic education. तो फिर हमें करना क्या है, होलिस्टिक एजुकेशन को वापस लाने के लिए आज के जो हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो कि यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड है, उन सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को हमें नालंदा के जैसा बनाना है, तक्षशिला के जैसा बनाना है, वल्लभी के जैसा बनाना है, जो भी हमारे 8-10 विश्वविद्यालय थे उस प्रकार। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये तो हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया, कहाँ का, नालंदा तक्षशिला का या विक्रमशिला वल्लभी का। अब दूसरी बात आती है, सिर्फ स्ट्रक्चर लाने से बात नहीं बनी, तो फिर करना क्या है, वी हैव टू रिवाइज आवर करिकुला आल्सो। आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम जो भी पढ़ते हैं वो वेस्टर्न मॉडल का, जो भी पढ़ते हैं दैट इज ऑफ वेस्टर्न मॉडल, उसमें कोई भी इंडियन जनरली होता नहीं। जो भी थेरीज हमारे पास है, जो भी लिटरेचर हमारे पास है, जो भी इंजीनियरिंग हमारे पास है, दैट इज ऑफ द वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न वर्ल्ड। सर एम आई विद यू, कोई है मेरे साथ? समवन देयर? यस सर, थैंक यू। आप कुछ भी करते रहो, मुझे आवाज देते रहो, आप गाड़ी चलाओ, चाय पियो, कुछ भी करो, बट बी विद मी, otherwise things will become very difficult. Yes. So the policy makers say now we will introduce or we will include IKS in our education system.
IKS, Indian Knowledge System. What is this Indian Knowledge System? It is nothing but the studies, the progress made by the Indians some 1000 years ago. अब हमारे सामने नरेशन क्या दिया जाता है कि हम बहुत आगे थे, हमने एरोप्लेन भी बनाया था, हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था, लेकिन बाहरी लोग आ गए, क्या कहते हो, आकांता आ गए, इन्वेडर्स आ गए, उन्होंने सारी चीजें बर्बाद कर दी. मतलब it is believed that once upon a time we were very much progressed, we were in very much advanced stage than the European world. लेकिन यूरोपियन लोगों ने जानबूझकर ये चीजें हमारे पढ़ाई से हटा दी ताकि हम अपने अतीत से कट जाए और हम सब कुछ उनकी तरह सीखने लगे, उनकी बात मानने लगे, उनको अच्छा कहने लगे. इसीलिए so to know, to see what our forefathers had done in astronomy, in mathematics, in chemistry, or in literature, in economy, whatever the branch of learning is there, हर चीज में, फिलोसफी में, योगा, मेडिसिन में, हर चीज में हिंदुस्तानी आगे थे, हिंदुस्तानी काफी हद तक आगे बढ़ चुके थे. तो what they did at that time makes IKS. अब ये पॉलिसी कहती है कि हमें होलिस्टिक एजुकेशन लाने के लिए हमें हमारा अतीत का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. इसीलिए आप देखते हैं कि एनईपी के तहत IKS का एक पेपर या कुछ कोर्स आपके करिकुलम में कंपल्सरी आ चुका है. जो भी आपका मेजर होगा, जिसको आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कहते हो, उस सब्जेक्ट का एक पेपर कंपल्सरीली, मे बी एट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, विल बी देयर. अब यहाँ मैंने कुछ नाम गिना है, ये थोड़ा मेरा गड़बड़ा गया है ये. तो यहाँ जो भी नाम है, चरका, सुसूत्रा, आर्यभट्टा, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, चक्रपाणी, माधवा, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुना, सो फॉर्थ, ये सारे एशियन दुनिया के स्कॉलर्स हैं. मैं उनको अलग भाषा में कहूंगा कि वो दे आर द साइंटिस्ट इन देयर डिसिप्लिन. आप इंजीनियरिंग से हो तो आपका नाता फिजिक्स से भी ज्यादा पड़ता है, आपका वास्ता मैथमेटिक्स से भी ज्यादा होता है, आपका वास्ता मेरे ख्याल से साउंड, एयर, ये सारी चीजों से होता है. इट इज पॉसिबल दैट यू नो समथिंग अबाउट दिस पीपल. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं कि भाई ये भास्कराचार्य कौन था, ये आर्यभट्टा कौन था. जब हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसका नाम मेरे ख्याल से आर्यभट्टा रखा था. Why Aryabhatta? Because that man, once upon a time, had made some advances in the direction of studying the space and other things. तो ये लोग हैं जो हमारा IKS बनाते हैं, या इन्होंने हमारा IKS बनाया. अब ये पॉलिसी चाहती है कि अब हम आज ये पढ़े कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया. सर, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताता हूं कि इनमें से कुछ लोगों का सिर्फ नाम मैंने सुना है. मैं दोहरा रहा हूं, इनमें से कुछ लोगों का सिर्फ मैंने नाम सुना है. मैं किसी के भी बारे में ऑथेंटिसिटी के साथ 4 सेंटेंस भी आपके सामने नहीं कह पाऊंगा. ज्यादा से ज्यादा मैं ऑथेंटिकली चाणक्य के बारे में कह सकता हूँ, चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर एंड हु रोट द बुक अर्थशास्त्र. देयरफॉर ही इज कॉल्ड कौटिल्य. इसके सिवाय without him or without this person, I don't know about other people mentioned.
वो कौन थे, वो कब पैदा हुए, वो कब तक जिए, उन्होंने किस राजा के साथ काम किया, या उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, उनकी मेजर इन्वेंशंस क्या है, आई डोंट नो। नागार्जुना के बारे में कहीं तो भी पढ़ा है मैंने कि नागार्जुना वाज द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने कहीं पढ़ा है, अगेन नॉट श्योर। पतंजलि के बारे में तो हमने बाबा रामदेव आने के बाद जानने लगे, अदरवाइज वी नेवर न्यू अबाउट एनीथिंग। परिंडी का ग्रामर था इतना मुझे पता है, उसके सिवाय मुझे कुछ भी पता नहीं। व्हाई आई डोंट नो? द रीजन इज सो सिंपल, बिकॉज आई नेवर स्टडीड देम। Why I didn't study them? Again, the answer is so simple that they were not part of my curricula. Again, the question is why were not part of my curricula? Because the European people, or particularly British power, did not want that we should know something about our past. तो उसके कारण इनको हटाया गया। ये पॉलिसी कहती है अगर हमें होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देना है तो इन लोगों को हमारे करिकुलम में लाना पड़ेगा। दैट इज सेकंड। थर्ड थिंग, हम कई बार कहते हैं कि हिंदुस्तान की सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत आदर्श। क्यों आदर्श है भाई? ये इसलिए आदर्श है कि हमारा वैल्यू सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग हुआ करता था, मैं कहूंगा था। जहां हम फैमिली की बात करते हैं, जहां हम रिश्ते नातों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज द बेस्ट। क्यों? इन वैल्यूज के चलते। लेकिन व्हाट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, आवर माइंड्स वेर आल्सो पॉलिटाइज्ड। हम सिर्फ बाह्य रूप से गुलाम नहीं बने, we became slave internally also, outer world and internal world also। क्योंकि हम सोचते भी उनकी तरह थे, हम चलते भी उनकी तरह थे, हम कपड़े भी उनकी तरह पहनते थे, हम खाते भी उनकी तरह थे, हम वॉशरूम भी उनकी तरह जाने लगे। So the policy says we will reintroduce। मैडम मैं आपको नमस्ते। उसके लिंक तो शायद बंद हो चुके हैं। आप क्या करना, अगर आपको वक्त मिलता है तो एक बार सेंटर में आ जाना और हमारे सर संतोष से बात करके ऐड कर लेते हैं। हाँ प्लीज। ठीक ओके। हाँ यस, आ जाइए, कल आ जाइए। ठीक, ओके, थैंक यू, नमस्ते। सॉरी। तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं मैं कि when Lord Macaulay came here, he noted one observation। वो कहता है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत रिच हैं, क्योंकि उनकी ताकत उनकी शिक्षा में है और उनके मॉरल सिस्टम में, वैल्यू सिस्टम में। और इन लोगों पे राज करने के लिए हमें इनके वैल्यू सिस्टम ब्रेक करना पड़ेगा जो उनकी रीढ़ की हड्डी। So naturally all those things were removed from our curriculum। तो ये पॉलिसी कहती है कि these Indian values जैसे कि ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, शांति, या उसके आगे जाके मैं कहूंगा कि मतलब कोएग्जिस्टेंस, सहजीवन हम इसको कहते हैं, साथ साथ जीना, मल्टीकल्चरलिज्म। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग बड़े प्यार से, बड़े शांति से रहते थे। दुनिया को हम सिखा सकते हैं कि भाई व्हाट इज मल्टी रिलीजियोसिटी, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये जो हमारे इंडियन वैल्यूज है जिससे हम
टूट चुके हैं, जिससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिससे हमें अलग कर दिया, उस वैल्यू सिस्टम को हम फिर एक बार अपने करिकुला में, अपने सिलेबस में लाएंगे। आपको ये भी पता होगा कि आपने कई बार सुना होगा कि दुनिया, मतलब हिंदुस्तान के बाहर दुनिया हमें सिर्फ दो नामों की वजह से जानती है। या दिस इज द लैंड ऑफ बुद्धा एंड गांधी। यूरोपियन वर्ल्ड से यस, इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धा एंड गांधी। तो दुनिया में हमारी पहचान बुद्ध और गांधी की वजह से है। सो वट एवर प्रिंसिपल बुद्धिज्म ऑफर्ड अस, जैसे ज्ञान, प्रज्ञा, शांति है, whatever principles, whatever values this Hinduism offered us, that is Indian. Whatever principle Jainism offered us, so these make the Indian value system. लेकिन अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, या जो वर्ल्ड वेस्टर्न इकोनॉमी से ड्रिवन है, उस वर्ल्ड में हमें सारी चीजें पीछे छोड़ चुकी है। तो ये पॉलिसी कहती है कि अगर हमें अपनी शिक्षा को होलिस्टिक बनाना है, तो वी हैव टू रिलाई अपॉन वंस अगेन आवर वैल्यू एजुकेशन सिस्टम। हम साइंस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो प्लीज एक बात को समझ लेना, एक बात प्लीज समझ लेना, एटॉमिक और एटम की स्टडी इंडियन लोगों ने भी की थी एशियन टाइम में, लेकिन किसी भी इंडियन साइंटिस्ट ने या इंडियन आई शुड से स्कॉलर ने कभी एटॉमिक बम की बात की, हमने कभी मिसाइल की बात नहीं। इट मीन व्हाट? द नॉलेज ऑफ साइंस विदाउट वैल्यू विल मेक यू डेमन, विल मेक यू डिक्टेटर, विल मेक यू डिस्ट्रॉयर। तो इसीलिए हम साइंस भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे वैल्यू सिस्टम भी चाहते हैं, जो वैल्यू सिस्टम हमें इंडियन बना के रखे, हमें इंसान बना के रखे। Therefore, this value system began. Then, third one, that is fourth one. What is the fourth way of making our education system Indian, or I should say indigenous one or holistic one? And that is encouraging studies in our own languages and our own culture. Or in other words, अपने पॉलिसी में पढ़ा होगा, the policy talks about promoting Indian languages, Indian culture, Indian arts. अब क्या हुआ है? Am I with you? कोई है मेरे साथ? हाँ है सर, है। यस सर, यस सर, यस मैं सर, अकेला ही चल रहा हूँ? यस सर, नहीं नहीं नहीं, यस सर, यस यस सर, वी आर विथ यू सर। लेकिन आपको मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको दूसरा मोबाइल यूज करना पड़ेगा सर, जो देखने के लिए। चलो, अब लेकिन उसको टाइम लगेगा, एनीवे टाइम लगेगा। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू मेक इट इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब सर देशी बनावट का। हम जिसको मेरे ख्याल से हिस्ट्री में एक वर्ड था एतद देशीय, मतलब यहाँ का, इस भूमि का, इस मिट्टी का। क्योंकि आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो वेस्टर्न, everything is given by the Western world, Western value system, Western education system, Western literature system, Western sciences, so and so forth. ये पॉलिसी कहती है कि now it is enough. Now this is the high time that we should read our literature. We should read our poets. We should read our novelists. We should read our dramatists. लेकिन आज आप सारे लोग शायद इस बात को अग्री करेंगे कि हम सारे लोग शेक्सपियर के बारे में ज्यादा जानते हैं और कालिदास के बारे में कम जानते हैं। अगर आप में से कोई इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करता है तो दैट पर्सन और दैट जेंटलमैन और जेंटलवुमन नोज मोर अबाउट शेक्सपियर एंड लेस अबाउट कालिदास। हम तो कभी कभी ये भी कहते हैं सर कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी इस बात को थोड़ा सा समझो।
Perhaps Kalidas lived and died in the 1st or 2nd century AD, and Shakespeare came in the 16th and 17th century AD. मतलब दोनों में कम से कम 500 से 600 सालों का अंतर है। और तुलना कैसी होती है? जनरली तुलना होती है नए आदमी की पुराने आदमी के साथ। जैसे कि मैंने अविनाश जी से कहा था कि वो आपकी तरह दिखते हैं। हम कहते हैं ना कि पोता दादा की तरह दिखता है। हम ऐसा तो नहीं कहते कि दादा पोते की तरह दिखते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हम तुलना कैसे करते हैं? हम क्या कहते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब हम शेक्सपियर को बड़ा मानते हैं और कालिदास को उसके सामने छोटा मानते हैं कि कालिदास उसकी बराबरी कर रहे हैं, लेकिन उल्टा है। बिकॉज कालिदास लिव्ड some 500 years or 600 बिफोर शेक्सपियर के। हम दूसरी बात कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस बात को भी आपने कई बार सुना होगा कि कुछ हिस्टोरियन ने लिख के रखा है कि विक्रमादित्य, समुद्र मेरे ख्याल से विक्रमादित्य है, सम्राट विक्रमादित्य इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया हु नेवर लॉस्ट एनी वॉर। अब इसमें दो चीजें देते हैं। एक, नेपोलियन बोनापार्ट केम इन द 19th century and Vikramaditya again Gupta period, maybe 1st century or 2nd century AD or BC. दूसरी बात, it is said that he never lost any war, but let me tell you, Napoleon Bonaparte in the last phase of his life lost many wars, particularly the Battle of Waterloo and the Battle of Trafalgar. मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ? मैं कहना यही चाह रहा हूं कि we are very much colonized in our studies of language and literature. हम शेक्सपियर को बड़ा मानते हैं, कालिदास को छोटा मानते हैं। हम नेपोलियन को बड़ा मानते हैं, विक्रमादित्य समुद्रगुप्त को कम मानते हैं। Why? Because there is a strong influence or dominance of British literature or English literature on our minds. इसीलिए ये पॉलिसी कहते हैं कि बस हो गया इंग्लिश का सम्मान, इट इज इनफ नाउ, बहुत हो गया सम्मान, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड आवर ओन लैंग्वेजेस। अब हम संस्कृत की बात करें, अब हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे। ये पॉलिसी कहती है कि देश के हर एक विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो पुरातन भाषाएं थी, जो कि हम जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, इनकी भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ मॉडर्न लैंग्वेजेस की भी बात की जाएगी जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। और ये पॉलिसी ये भी कहती है कि वी विल स्टार्ट एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ताकि सारी भाषाओं में एक आपसी संबंध बना रहे, एक लेन देन बने। मीन्स व्हाट? आपको इंग्लिश के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन इंग्लिश एंड माय बेसिक डिसिप्लिन आल्सो हैज बीन इंग्लिश। आई नीड नॉट से और आई नीड नॉट टेल मेनी मोर थिंग्स अबाउट दैट। लेकिन हम जानते हैं कि टुडे इन इंडिया इंग्लिश हैज गॉट a very prestigious place. Am I right, sir? English language in India has got a very prestigious status, prestigious place than any other Indian languages. Kyun? Because it was the language of the rulers. Why? Because it was the language of instruction. Because it was the language of Shakespeare and many more people. तो ये पॉलिसी कहते now बहुत हो गया इंग्लिश का सम्मान, now let us move towards our own roots, and our roots are in our literature, because according to this policy maker the entire knowledge of India lies in Sanskrit. मैं उनसे ये अग्री नहीं करता मैं कि संस्कृत इज द देव भाषा। नो भाषा was written by God, everything is written by human beings. अगर खुदा ने लिखी होती तो मतलब वो मर नहीं जाती, लेकिन संस्कृत अभी चलन में नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज, दीज आर सम ऑफ द मेजर्स that this policy talks about for
bringing in this holistic or multidisciplinary education in India. Let me move one step ahead. भाग क्यों रहा है? हाँ, अब दूसरा सवाल है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारा टारगेट, हमारी मंजिल है होलिस्टिक एजुकेशन लाना, राइट? अब ये बात आती कहाँ गया अभी? एक पे ज्यादा ही जा रहा है शायद ये. This one. As I told you in the very beginning, that holistic education is our target, our manzil, our goal, and multidisciplinary education is the very first step, the very first step to go towards holistic education. तो अब यहाँ बात करेंगे हम how to make our present education system multidisciplinary. सबसे पहले तो ये पॉलिसी कहती है कि हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो फ्रैगमेंटेशन बना है डिफरेंट फैकल्टीज का, डिफरेंट डिसिप्लिन का, उसको खत्म करते हैं. मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी located at Lonere in district Raigad at present is offering education in technology only. Or the 4 universities, agriculture universities located at Akola, Parvani, Ahmednagar and Dapoli are offering only agricultural education. या फिर मैं कहूंगा कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, perhaps in Nagpur district, is offering education about Sanskrit only. Other things are not taught there. That is single disciplinary education. The policy says it will not work. ये नहीं चल पाता. ये ना चल बे, इसको हम सारे यूनिवर्सिटीज को हमें अब मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिसिन. ये कैटेगरीली कहती है ये पॉलिसी कि हम सिर्फ एक यूनिकनेस वी विल कीप ऑफ मेडिकल मेडिसिन फैकल्टी एंड लीगल फैकल्टी. रेस्ट ऑफ द फैकल्टी, रेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन विल बिकम वन. इसका मतलब कि अगर आपको ये ताजुब नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर आपके अकोला की पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अगर आपके अमरावती विश्वविद्यालय के जैसा बन जाए या नागपुर विश्वविद्यालय के जैसा बन जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए. अगर रामटेक का कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ अगर नागपुर विद्यापीठ की तरह हर डिसिप्लिन में एजुकेशन देता है तो आपको ताजुब नहीं होगा. इट मीन्स दैट by ending the fragmentation of universities and colleges, education will be multidisciplinary. Second thing, मैं कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ. According to the data of 21-22, there are some 45,000 colleges in India. I repeat, according to that year data, there are some 45,000 colleges, more than 45,000 colleges, but I'm using the figure 45,000 colleges. Let me tell you, sirs, out of those 45,000 colleges, लगभग 30% colleges are single faculty colleges. आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, सिर्फ इंजीनियरिंग वो सिखाता है. Perhaps faculty of arts is not there. Perhaps faculty of maybe agriculture is not there. Perhaps faculty of fine art is not there. Perhaps faculty of language is not there. The subject may be there, but faculty is not there. ऐसे हमारे देश में 30% कॉलेजेस है
जो सिर्फ सिंगल फैकल्टी चलाते हैं, जैसे कि ओनली आर्ट्स फैकल्टी इज देयर और ओनली कॉमर्स इज देयर और ओनली साइंस इज देयर और ओनली एग्रीकल्चर इज देयर। तो ये पॉलिसी कहती है कि अब ये सारे कॉलेजेस सिंगल फैकल्टी से निकलकर मल्टी फैकल्टी बनेंगे, तभी तो स्टूडेंट को उसी कॉलेज में डिफरेंट फैकल्टीज के सब्जेक्ट लेने का मौका मिलेगा। Then only that particular college or university will be able to offer multidisciplinary education there. That is one thing. Second thing, integrating humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics. ये बहुत जरूरी है। हम इसको इन शॉर्ट स्टेम कहते हैं, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब ये एक अपना वजूद रखते हैं। These four subjects or these four areas have their own status, have their own importance. But ये पॉलिसी कहती है कि अब हम इसको ह्यूमैनिटीज के साथ और आर्ट साइंस आर्ट सब्जेक्ट के साथ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए तो अब हमारे NEP के करिकुला में क्या स्किल एनहांसमेंट कोर्स आ चुके हैं, या फिर क्या जेनरिक कोर्सेस आ चुके हैं, या ओपन इलेक्टिव आ चुके हैं। Why? To bring those things in our right. जैसे कि हो सकता है कि कोई आर्ट्स का बच्चा हो सकता है कि साइंस का एक आधा क्रेडिट या 4 क्रेडिट का या 2 क्रेडिट का कोर्स पूरा करेगा, या फिर साइंस का कोई बच्चा अगर वहां म्यूजिक फैकल्टी अवेलेबल है तो म्यूजिक का कोई एक आधा कोर्स पूरा कर पाएगा। This is what? This is nothing but integrating the things, integrating the vocational education with traditional courses. हम ट्रेडिशनल कोर्सेज किसको कहते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अकॉर्डिंग टू अस दीज आर द नॉन टेक्निकल कोर्सेज। हम जिसको अतांत्रिक बोलते हैं, उसको अकृषि कोर्सेज बोलते हैं, अकृषि विद्यापीठ, अतांत्रिक विद्यापीठ। Why? Because they offer education in these faculties only, or the particular college offer. When arts college we are talking about, only traditional courses are offered there. The student cannot take any, I can say, some course from technical education. So to integrate the thing, or by integrating science, technology, engineering and mathematics with humanities and arts and science, the multidisciplinary education can be brought in. The next thing, by offering education in 64 kalas, 64 kala. Well, in that there may be some arts, there may be some skills, there may be some folk things and other things. Then there may be some soft skill, there may be some hard skill, there may be some life skill, there may be some values and so on and so forth. जो भी कला है, गाना है, बजाना है, डांस, क्या डांस एंड परफॉर्मेंस है, डांस एंड म्यूजिक है, whatever arts are, हो सकता है कि आई एम अ गुड कारपेंटर, आई एम अ गुड पेंटर, आई एम अ गुड स्केचमैन. So whatever those 64 arts are there, those will be given encouragement here. And last one here, that is more important again, the policy says now we will offer education in regional language, in our mother language. हम कहीं ना कहीं मान के चले कि भाई higher education takes place in English only. This policy breaks this myth, or at least I should say plans to break this myth, plans to break this system practice. It says now all the subjects will be taught in mother language, in mother tongue, because in mother tongue the learners learn the things in better way than any other language. तो इसलिए हम देखते हैं कि अब अपने विश्वविद्यालय में बहुत सारे इंग्लिश टेक्स्ट का ट्रांसलेशन होना शुरू हो चुका है. मैं तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर पे एक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय विदिशा और भोपाल के पास, रायसेन विदिशा भोपाल के पास. तो देयर इवन engineering is taught in Hindi, medicine is taught in Hindi, and one more thing here,
some local expertise can be invited in teaching. जरूरी नहीं, जैसे कि अभी जो ड्राफ्ट को लेकर इतना बवाल मचा है, उसका रूट्स यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो वो वाइस चांसलर बन सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पीजी एक सब्जेक्ट में है, मैं मेरा पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में करूं, और हो सकता है कि मैं तीसरा कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊं। सो दिस आई शुड से दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आर बीइंग शेकन। हो सकता है कि आपको आपके कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए किसी अनपढ़ को आप लेके आ सकते हैं, जो बशर्ते वो अपनी क्षेत्र में माहिर हो, महारत है। So these four things: ending fragmentation of our universities and colleges, then integrating science and technology and engineering, mathematics with art, then offering education in 54 kalas, and use of mother tongue and local expertise in education will make our education system or education multidisciplinary. Next, ये थोड़ा आगे भी हो चुका है शायद। No, so far I talked about two things. मैंने दो चीजों के बारे में बात। एक, holistic education means what? Second thing, in what way holistic education will be brought in, or how we are going to make our education system multidisciplinary. अब तीसरा पार्ट यहाँ मेरा शुरू हो जाता है, that is what challenges are there. हालांकि मेरे ख्याल से मेरी एक स्लाइड कहीं तो यहाँ से मिसिंग है यहाँ, perhaps it is somewhere disturbed. तो what are the challenges? सबसे बड़ी बात यह है कि what challenges are there to bring these things in our curriculum. हमारी शिक्षा में होलिस्टिसिटी लाने के रास्ते में क्या दिक्कतें हैं, क्या मुसीबतें हैं, क्या समस्याएं हैं। साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के चक्कर में और बनाने के रास्ते में मार्ग में क्या दिक्कतें हैं। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग। वन थिंग, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, द फर्स्ट वे दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट modeling our present day universities and colleges on the line of Nalanda and Takshashila. That is one target. Now, how difficult it is? कोणी आहे का माझ्यासोबत? आहे सर, आए हम जिंदा है कहिए, टाइगर अभी जिंदा है ना? तो what is the first difficulty here? The first difficulty is that at present we exactly don't know, or we don't know exactly how these universities used to run. मेरे ख्याल से हमारे किसी के पास भी ये पुख्ता सबूत नहीं है जो कि हमें बताए कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ऐसे चलता था, इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, बच्चों का सिलेक्शन ऐसे ऐसे होता था, हमारे पास ऐसा कोई भी एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से कोई हमारे पास सत्ता पुख्ता सबूत नहीं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, नाउ सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के कुछ हिस्से, ऑफ कोर्स देयर ऑब्जेक्शंस आर क्वाइट वैलिड, दे मे थिंक, और कुछ लोग सोचते भी है ऐसा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो कोई नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन व्हेन यू हैव डिस्कशन विद देम इन प्राइवेट स्फीयर दे विल रेज देयर ऑब्जेक्शन। वे आखिर में करना क्या चाहते हैं? एशियन एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? क्या अब हमें वेद को पढ़ना पड़ेगा? क्या हमें उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे? क्या हमें ज्योतिषीय पढ़ना पड़ेगा? क्या हमें पुराण पढ़ने पड़ेंगे? क्या हमें गुरु पुराण पढ़ना पड़ेगा? क्या हम उस समय की तरफ जा रहे हैं जो गुजर चुका है? क्या हम समय के चक्के उल्टे घुमा रहे हैं? अगर हम एशियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हो तो ये भी सवाल बनता है कि वॉज द एजुकेशन
ऑफ द एशियंट टाइम ओपन टू ऑल? बिल्कुल नहीं था। 1000 साल पहले या 1500 साल पहले सारे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, फॉर्मल एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ राजा महाराजा के बच्चे जो लड़ाई करते थे या जो ट्रेडर कम्युनिटी थी उनको मिलता था, बाकी किसी कारागिर को या जो मैनुअल काम करता था उनको शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। दैट इज वन ऑब्जेक्शन। सेकंड ऑब्जेक्शन, संस्कृत पे इतना जोर क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी संस्कृत पे ज्यादा एम्फोसिस देती है। वो कहते कि हर विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, एंड देन देयर विल बी स्टडी ऑफ सो मेनी थिंग्स देयर। तो व्हाई दिस मच फोकस ऑन संस्कृत? तो फिर बाकी भाषा वाले नाराज नहीं होंगे? इट मींस सम पीपल मे टेक इट, आई एम नॉट टेलिंग दैट दे विल टेक इट, दे मे टेक इट as a way, as a tool to impose Sanskrit on other people. मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे ख्याल से हम ये भी जानते हैं कि जब 1960s में 1960 के आसपास जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई और कुछ सदर स्टेट पे वो लादने की कोशिश की तो वह बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ था, पर्टिकुलरली तमिलनाडु। और आज भी अगर आप कोई इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली द हिंदू जैसा पेपर पढ़ते हैं, तो 2 महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का स्टेटमेंट था, जरा दिसंबर या नवंबर के सितंबर अक्टूबर की बात पेपर निकाले ना, वहां स्टेटमेंट है उनका, एम.के. स्टालिन का, कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एनक्रोचिंग और सुपरसीडिंग आवर लैंग्वेज। हमें हिंदी पखवाड़ा मनाओ, ये लिखो हिंदी में, ये करो हिंदी में, इतनी सारी चीजें हम पे थोप कर हमारी भाषा को कम मानना चाहती है। So this kind of protest may take place. One more thing there, वो कभी कभी मेरे भी दिमाग में आता है, बट आई एम नॉट दैट मच वायलेंट और स्ट्रॉन्ग, कि अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में सरकार चाहती है कि संस्कृत डिपार्टमेंट खुले, आई विल से ओके, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये मेरी भी जिद रहेगी या मेरी भी डिमांड रहेगी कि गोरखपुर में मराठी डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर मेरठ में तमिल डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर मैं कहूंगा कि पंजाब के किसी विश्वविद्यालय में मलयालम डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर आसाम में कन्नड़ डिपार्टमेंट होना चाहिए। So this is one thing, and another thing that I would like to say here, कि भाई थोड़ा सा एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी हो रही है। तो सेंटर में एक पार्टी का रूल है और स्टेट में किसी और पार्टी का रूल है, तो some incident, some possibilities of clashes are there, and those clashes also may pose some question. हालांकि 2 हफ्ते पहले मैं कहीं गया था तो वहां मुझे किसी ने बताया कि स्टेट कैनॉट डिनाई और कैनॉट रिफ्यूज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये कहा गया कि स्टेट कैनॉट डिनाई और स्टेट कैनॉट रिफ्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी बिकॉज नाउ द सब्जेक्ट एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिवीजन है सब्जेक्ट की, ये स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा, ये सेंटर का रहेगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों तरफ है, और जो जब कोई चीजें दोनों तरफ होती है तो वहां सेंटर पावरफुल हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर ये एक दूसरे को कम ज्यादा आंकने की कोशिश हो गई तो समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनटूवर्ड में टेक प्लेस। और सबसे लास्ट में मैं कहूंगा one more important thing is there, that is financial issues. अभी पॉलिसी ये भी कहती है कि हर विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलेगा, हाँ खुलेगा। हर कॉलेज मल्टी फैकल्टी कॉलेज बनेगा, हाँ बनेगा। अब देख लेना, मैं आपको एक भी बता दूं कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। वेंकट साहब, मैं आपको बता दूं कि
सेंटर द्वारा चलाए जाने वाले विश्वविद्यालय में हमारे देश के सिर्फ 6% स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे सुन रहे हैं ना? मैं इसको थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट। यस सर। लेट मी टेल यू कि कोई है मेरे साथ जिनको Yes, मैं sir. देख सकूं? यस, Yes, sir. अमोल यस सर। यस मैं आपको डेटा के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश के टोटल स्टूडेंट से सिर्फ 6% स्टूडेंट केंद्र द्वारा और सेंटर द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूट में है। स्टेट द्वारा चलाए जाने वाले यूनिवर्सिटीज में लगभग मेरे ख्याल से 37% है और प्राइवेट कॉलेजेस में ये नंबर 57% है। See, this is the unequal distribution of the load of higher education. अब मैं टीचर की भी बात करता हूं। आपको ये सोच के शॉक लगेगा, शॉक ही लगेगा। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज में हमारे टोटल टीचर में से सिर्फ एंड सिर्फ 3% टीचर्स। स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट फंडेड में लगभग 22% है टीचर की संख्या 15 लाख से, और प्राइवेट कॉलेजेस में और प्राइवेट सेक्टर में 75% हमारे टीचर काम करते हैं, ये 15-16 लाख में से। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेजेस ज्यादा कहाँ हैं? स्टेट में। यूनिवर्सिटी ज्यादा कहाँ है? स्टेट्स में। तो स्टेट पर हायर एजुकेशन का लोड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेंटर। आप देख लेना, यहां बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब स्टेट्स आर नॉट कंपैरेटिवली एज साउंड इन फाइन आर्ट्स एज द सेंटर। मैं आपको शायद अच्छी तरह पता होगा कि जब से ये जीएसटी आया है, सारे लोकल टैक्स खत्म हो गए, सारे स्टेट के टैक्सेस खत्म हो गए एक्सेप्ट शराब एंड पेट्रोल। आपको ये भी बता दूं मैं कि सिर्फ अभी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है जो पेट्रोल एंड अदर चीज के जो लोकल टैक्स है उसका, और जो शराब पे। सर मैं आपको बता दूं सबका साहब कि अभी भी शराब और पेट्रोलियम लिक्विड आर नॉट टेकन अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी के तहत नहीं है, ये आज भी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा स्टेट को इन्हीं माध्यम से आता है, अदरवाइज द एंटायर टैक्स कलेक्शन अंडर जीएसटी इज टेकन अवे बाय द सेंटर, और फिर हमें उनका हिस्सा मांगना पड़ता है, हिस्सा मांगना पड़ता है। मतलब वी आर डिपेंडेंट फॉर फाइनेंस ऑन द सेंटर, और वो पैसा वक्त पे रिलीज नहीं होता है। और ऐसे हालात में, जैसे कि मेरा पहला स्टेटमेंट देख लीजिए कि द मैक्सिमम लोड ऑफ हायर एजुकेशन इज ऑन द स्टेट्स and the maximum tax collection is with the center. So this imbalance, and इसमें अगर पॉलिटिक्स ऐड किया जाए तो फिर बातें अलग अलग दिशा में जाती है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो पैसा वहां थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। आई एम नॉट यूजिंग इन द पॉलिटिक्स, मतलब अगर सेम पार्टी की सरकार उस स्टेट में है तो पैसा जल्दी रिलीज हो जाता है, अगर नहीं है तो कुछ दिक्कतें वहां बन सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज in the entire implementation of the NEP 2020, but some specific issues are there। जैसे कि मैंने कहा कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे मान लीजिए, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, आपने मांगा कि हमें फार्मेसी चाहिए, मिल जाएगा। आपने कहा कि हमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस चाहिए, मिल जाएगा। विदाउट इन हेजिटेशन, बड़े दिलदारी के साथ हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको आर्ट्स फैकल्टी चाहिए ले लो, कॉमर्स चाहिए ले लो, साइंस चाहिए ले लो, जो मांगते हो ले लो, लेकिन साथ ही कहेंगे कि हम आपको 1 रुपया नहीं दे सकते। टीचर अपॉइंट कैसे करने आपका इश्यू है, आप वारंट पे लिख के देंगे कि हम कोई ग्रांट की डिमांड नहीं करेंगे, हम इसको सेल्फ फाइनेंस में चलाएं। टीचर अपॉइंट आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख लो, लैबोरेटरीज आप खड़ी करो, किताबें आप परचेस करो, कैसे करते हो हमें पता।
व्हाट माय पॉइंट इज देयर, अगर मैं किसी कॉलेज को मल्टी फैकल्टी बना तो ये चीजों की तरफ कौन देखे? कहने के लिए तो आसान है कि भाई सिंगल फैकल्टी आर्ट्स कॉलेज है आपके पास, तो चलो साइंस कॉमर्स लेके जाओ, आपका कॉलेज मल्टी फैकल्टी बन जाएगा, या सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज है चलो इंजीनियरिंग लेके जाओ। ये कहने के लिए आसान है, लेकिन प्लीज रिमेंबर ऑल द मैनेजमेंट, all the institutes are not financially competent enough to run all these things. So these are some of the issues in the ways of implementing or bringing this multidisciplinarity in our education. मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं जो मैंने अब तक आपके सामने रखा है. One thing, for this policy, holistic education means the education system of ancient India, that is indigenous education. And as I told you, the target is holistic education, and the first step in that direction is multidisciplinary education. Second point I discussed with you, or I presented for you, was the ways or the methods or the strategies with which this holistic education will be brought in, or in what way the present education system will be made multidisciplinary. And third thing, the last point I presented before you was the possible challenges. Possible, I should say, the present challenges and possible challenges. फाइनेंस के इश्यू तो आज भी है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का इश्यू आज भी है, लेकिन मैंने साथ ही साथ जो आने वाले समय में जो इश्यू बन सकते हैं उसके बारे में भी आपके साथ बात की. एंड लास्टली लेट मी टेल यू वन थिंग, आखिर में एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि वॉट एवर आई टॉक्ड बिफोर यू, स्पोक बिफोर यू, दीज वेर माय ऑब्जर्वेशंस after reading the policy document for a good number of times, after reading some articles written on NEP 2020, after listening to people like you, and after discussing these issues with the people working in the education sector. So what I said may not be the final truth. हम कहते नहीं कि एक कॉइन के दो साइड होते हैं, और मैंने आपसे शुरू में कहा, I am neither in favor of policy nor against the policy. I put the picture as I understood. बाकी picture अच्छी लगी बुरी लगी that depends on. So I would like to stop here, and if you have something to add to what I said, if you have something to improve what I said, and if you have something to disagree with me, you are most welcome. Over to you. मेश्राम साहब, ओवर टू यू. सर एक क्वेश्चन यूट्यूब में है, क्वेश्चन से कहने के बजाय ऑब्झर्वेशन, मराठीतला प्रश्न आहे सर. सहभागींचं असं मत आहे की एकीकडे शासन एज्युकेशनला चंद्रावर पोहोचवण्याच्या गोष्टी करतं आणि दुसरीकडे पैसे देण्याच्या बाबतीत किंवा फॅकल्टी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या जेव्हा मागणीसाठी आपण समोर जातो त्यावेळेस आपल्याला सावत्र मायचं लेकरं म्हणून ट्रीट करतं. तर या संदर्भात आपलं ओपिनियन काय? मी ज्या आमच्या पार्टिसिपंटनी हे मत व्यक्त केले त्याच्याशी मी 200% अग्रीड आहे. कारण सांगतो तुम्हाला की तुम्ही जर मागचे 2-3 बजेट पाहिले असतील सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, कालच्या किंवा याच महिन्यात दाखल केलेल्या सादर केलेल्या बजेटमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 11,000 कोटी रुपये कमी दिलेले आहेत. याची दुसरी एक बाजू सांगतो की एनईपी या डॉक्युमेंट मध्ये इथे फार छान शब्द वापरले आहेत. फिलॉन्थ्रोपिक और फिलॉन्थ्रोपिस्ट, थोडक्यात प्रायव्हेट पीपल. दिस पॉलिसी ऑफर्स maximum space to the private partners or private education system, or I should say private universities and private colleges. So dhire government is trying to hand over the things to the private people. अब मेरा स्टेक क्या है इसमें, आपका सवाल है. आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, जरूर आपके साथ हूं, क्योंकि ये मेरी भी सोच है कि no government can call itself a welfare state if
it is shrinking its hand from the sectors like education and health. बाकी सारी चीजें आप प्राइवेटाइज कर लो, not much different is brought there, not much difficulty there. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में कम से कम गवर्नमेंट को लोगों के फेवर में रहना ही चाहिए, या इसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए. कुछ हद तक प्रोफेशनल एजुकेशन आता है तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट नो, आई एम रियली विद यू. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये करो वो करो सब कहते हैं. अब हमारे पहले एजुकेशन पॉलिसी से, कमीशन से चलते आए कि हमें हमारे जीडीपी का 6% देना है या समथिंग करना है, लेकिन आज भी हम सर 3% तक भी नहीं जा चुके, या उसके आसपास. सो दिस इज द रियलिटी. लेट मी टेल यू वन थिंग सर, अब ये जरूरी नहीं कि इस पॉलिसी में इतने सारे गोल्स रखे हैं अच्छी हो. और आज हम ये नहीं कह सकते कि अभी और 15 साल का पीरियड बचा है. इस पॉलिसी का पीरियड 2040 तक का है, क्योंकि जनरली ये मान के चलते हैं कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 20 साल का समय देना चाहिए. सो दिस पॉलिसी will be fully operational, fully functional by 2040, and then only at that point of time we will be able to evaluate, assess what was good with the policy and where we went wrong. And at that time I may be little bit futuristic. मैं वहां जाके बात कर सकता हूँ कि हो सकता है कि 2040 में किसने आगे जाके देख कोई होगा कोई नहीं होगा, लेकिन when we will see to write the pros and cons, इसमें प्लस पॉइंट्स क्या थे और इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, तो शायद एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा कि द फंडिंग वाज नॉट एट पार विद द एक्सपेक्टेशन. जिस प्रकार की उम्मीदें, जिस प्रकार की अपेक्षाएं, जिस प्रकार के गोल्स रखे थे इस पॉलिसी में, हो सकता है कि उस प्रोपोर्शन में, उस मात्रा में फंडिंग नहीं आई. एंड परहैप्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग and समझा गया what was झालं, at that time we may also say that government gave everything to the private people and this happened. So that will the time will have answer to all these questions. लेकिन एक बात तो सच है कि without money no quality education is possible. You take my words, without finance no quality education is possible. That is what I have to say. Thank you. Thank you, sir. Thank you. If you could permit, shall we conclude, sir? Yes, please, sure. Yeah. So, पानी पीते पीते थक गया हूँ मैं भी. सभी Sir, I have a question. please. सत्कार सर. हा सर, नमस्कार. म्हटलं सर, सर्वात पहिले तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही खूप छान प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन केले. तर माझा एक छोटासा क्वेश्चन होता सर. पहिल्या जुन्या काळामध्ये जसं विश्वविद्यालय होतं आणि जुन्या ह्याच्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्या काळाच्या नुसार स्किल डेव्हलपमेंट करण्याचं काम ते विश्वविद्यालय करायचं, तसं सध्याच्या या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना इन युअर ओपिनियन सर, विच स्किल आर करंटली इम्पॉर्टंट फॉर हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट फॉर स्टुडंट्स? सगळ्यात पहिल्यांदा, what do you mean by holistic education? That is one thing. Now, when we are talking about knowledge and succession and the education system prior to that, त्याच्या अगोदर सिस्टम पाहूया. कि समझा मैं एक राजपुत्र है, समझा आई एम नॉट, बट हमें कहने में क्या जाता है कि मान लीजिए कि मैं प्रिंस हूँ, राजपुत्र हूँ, तो मेरे लिए होलिस्टिक क्या है कि मेरी जिंदगी ठीक से चलने के लिए जो जिम्मेदारियां मुझे आगे चलकर निभानी है, उसको ठीक से निभाने के लिए मुझे जो चीजें जरूरी होती है वो चीजें मेरे लिए और मेरे लाइफ को होलिस्टिक बनाती है. जैसे कि मैं मान लीजिए कि आगे चलकर राजा बनने वाला, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन मान लीजिए, तो मुझे क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे वॉरफेयर आना चाहिए. दूसरी साथ साथ मुझे राजकारभार चलाना भी आना चाहिए. साथ साथ मुझे नीति शास्त्र की भी जानकारी चाहिए. साथ साथ मुझे इकोनॉमिक्स की भी जानकारी चाहिए. तो these were the things that I need to run my state as the king. And remember, at that time, त्या काळामध्ये एखाद्या राजपुत्राला ह्या सगळ्या गोष्टीचं शिक्षण दिल्या जात होतं.
म्हणून तुम्ही आता रामायणाला महाभारताला आपण इतिहास समजायचं ठरवलं. आय डोंट टेक इट, बट समजा आपण थोड्या वेळा समजा हा इतिहास आहे तर लक्षात येईल तुमच्या ह्या राजपुत्रांनी, मग ते 5 पांडव असतील किंवा हे राम लक्ष्मण असतील, 4 राजपुत्र असतील, यांचा एकच गुरु कोणी नव्हता लक्षात ठेवा. काही पाठ ते एका ऋषीकडे पूर्ण करायचे, दुसरा पाठ ते दुसऱ्या ऋषीकडे जाऊन पूर्ण करायचे. कारण काही ऋषी त्यांना वॉरफेअर शिकवेल, जसे की आपण द्रोणाचार्याचं पाहतो. द्रोणाचार्य टॉट देम वॉरफेअर, परंतु काही दुसरे ऋषींनी दुसऱ्या काही गोष्टी शिकवलेल्या आहेत त्यांना. व्हॉट माय पॉइंट इज दॅट की दे यूज टू कलेक्ट क्रेडिट. आजच्या भाषेमध्ये आपण असं बोलूया, आजच्या भाषेमध्ये म्हणूया आपण की दे यूज टू कलेक्ट क्रेडिट फ्रॉम डिफरंट टीचर्स. दॅट वॉज देअर. नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ स्किल एज्युकेशन टुडे, आता देर मे बी सम सॉफ्ट स्किल, देर मे बी सम आई शुड से हार्ड स्किल. अगर मैं कुछ चीज हाथ में लेकर कुछ सीखता हूं तो दैट इज हार्ड स्किल. लेकिन मेरा लिखना है, मेरी बात करना है, या फिर मेरा कुछ मतलब माय प्रेजेंटेशन इज देयर, माय रिपोर्ट राइटिंग इज देयर, दीज आर द सॉफ्ट स्किल. अब देखो, अब चीज बदली कैसी है, मैं आपको बताता हूँ. अगर हम सिर्फ मैनुअल स्किल्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल स्किल की बात करेंगे, टेक्निकल स्किल की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें पहले आईटीआई में और जीटीआई में दी जाती थी, और उसकी टीचिंग और उसके रिसर्च का काम होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अब आगे बीटेक जो भी है उसको होता था. लेकिन अब ये पॉलिसी चाहती है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्किल विद हिम. I repeat, he should not be plain BA. He should not be a plain BCom. Along with the degree or the document of that BCom or BSc or what it may be, he must have knowledge, or I should say at least one working skill with him. इसलिए तो ये पॉलिसी बात करती है कि सेकेंडरी एजुकेशन से, पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम द स्टैंडर्ड, ए स्टैंडर्ड से अब स्कूल में भी ये सिखाया जाएगा कि कम से कम आपको एक स्किल सीखना है. और आगे जाके मैं इस पॉलिसी का एम्बिशन बता दूं. ये पॉलिसी कहती थी, अब 2025 आ गया है, जब 2020 में ये पॉलिसी आई तो उसमें लिखा था कि बाय 2025, सबका सर, द पॉलिसी सेड बाय 2025 वी वांट टू ऑफर स्किल एजुकेशन to at least 50% of our students of secondary education and higher education. अब वो कैसे? हर स्कूल को किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाएगा. हो सकता है कोई वर्कशॉप हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल का दुकान हो, और हर विश्वविद्यालय को, हर कॉलेज को किसी न किसी लोकल इंडस्ट्री के साथ किया जाएगा. अब मैं थोड़ा सा आगे जाके मैं कहूँ कि ये हर किसी व्यक्ति को एक कारागिर बनाना चाहते हैं. मैं इस वर्ड को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कम नहीं आकर हूं, लेकिन मुझे कोई ना कोई कारागिरी आनी चाहिए. हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, हो सकता है कि मैं वेल्डर हूँ, हो सकता है कि मैं छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं कुछ चीजें अपने तरीके से बना सकूं. सो दैट इज व्हाट मीन. अब बात आती है लाइफ स्किल. लाइफ स्किल तो बहुत सारी चीजें. सो देयर इज अ डिविजन ऑफ सो मेनी स्किल्स. कुछ टेक्निकल स्किल्स है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स है, कुछ लाइफ स्किल्स है, एंड सो एंड सो फोर्थ. दिस इज व्हाट इट मीन. तो अभी जो जिम्मेदारी अब तक हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज चलाने वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास नहीं थी, अब वो भी आने लगी. दैट इज वन. दिस इज व्हाट आई हैव टू से. सबका असं मला वाटतंय आई आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. Yes, thank you, sir. Thank you. Anybody else? Hello, sir. Hello. Yes, sir. हाँ. I have one question. आपके कहने के हिसाब से म्हणजे तुमच्या जे एकूण बोलण्यावरनं दिसतंय का आपण स्टुडंट सेंट्रिक आणि स्टुडंट्सला मल्टिपल स्किल्स पैकी ऍटलिस्ट एखादं स्किल यायला हवं असं आपण म्हणतोय. That is what written in the policy. ओके सर. बट इन दॅट केस आपण विद्यार्थ्यांना त्याची चॉईस जे आहे, म्हणजे माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू असा आहे की ओपन इलेक्टिव्ह हा जो प्रकार आहे, होई ज्याला आपण म्हणतो, आता त्याच्यामध्ये एक नॉर्म्स टाकलाय की विद्यार्थ्यांनी त्याची जी फॅकल्टी आहे, समजा सायन्स स्ट्रीम असेल त्यांनी आर्ट कॉमर्सचं घ्यावं. पण मग सायन्स स्ट्रीम मध्येच जर त्याला आणखी पण ओपन इलेक्टिव्हचे चॉईसेस त्याला मिळत असतील तर त्याने मग विद्यार्थ्यांनी सायन्स मधूनच ओपन इलेक्टिव्ह जर करता येत असेल तर काय हरकत आहे? कारण की माझा बॅकग्राऊंड आहे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आमचं
लक्षात तो आलं. छान आता सिलेबस आहे ओईचा, पण आमच्याच आता- विद्यार्थ्यांना तो करता येत नाही. तर याच्यात इथं तुमच्या सांगण्यानुसार मला प्रॉब्लेम दिसतोय इंटरप्रिटेशन लेवलवर. करेक्ट. Hmm? हा. Open elective does not mean that a student of engineering should take a subject from agricultural or arts or commerce. असं नाही ना त्याच्यामध्ये. If his major discipline is electrical one, so he can go for some OE from civil line or maybe from T&C or maybe some computer science. This should be the interpretation. This should be the interpretation. म्हणून म्हणतोय मी, मला वाटतं तुमच्या विद्यापीठानं ही क्लबिंग करताना काहीतरी थोडस आता आमच्या इथे बघा सर, आमच्या कॉलेजमध्ये आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आहे. आता आय एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बॅकग्राऊंड आणि आमचा ओई खूप छान आहे. आणि एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंटला जे स्किल यायला पाहिजे ते ओई मध्ये त्यांनी डिझाईन केलेलं. पण आमच्याच विद्यार्थ्यांना म्हणजे ज्या नॉर्म्स आहेत त्याच्यानुसार सायन्सच्या विद्यार्थ्याला त्याचा सब्जेक्ट मधला ओळी घेता येत नाही. म्हणजे आपण एका बाजूला इलेक्टिव्ह म्हणत आहोत, पण तो इलेक्टिव्ह त्यालाच नाकारत होता. हा, एक्झॅक्टली. दॅट इज माय पॉइंट. But I think that is the problem at the interpretation level. Ha university specific question hai, so you should write to them. Sir, actually, one committee is sitting there. Honorable Vice Chancellor sir has constituted one committee to resolve this problem, because what happened suddenly when the GR of government of Maharashtra has came with the frame of 22 credit in a semester. In that time this mistake has been happened, and that issue was ridiculously discussed in the academic council, and the Honorable Vice Chancellor sir has constituted a committee to resolve this issue. पण सर याला दुसरी एक बाजू आहे बरं का. सर म्हणतात तो मुद्दा आहे, पण दुसरी एक बाजू आहे सर. हो काय लागलं माहितीये का, आता हे NEPच्या अगोदर जेव्हा CBSE आलं, आता मी औरंगाबाद विद्यापीठात होतो त्या काळामध्ये, तर मी ऑब्झर्व केलंय. काय केलं असं माहितीये का, त्या काळात होतं ना ओपन इलेक्टिव्ह किंवा काय म्हणतो आपण त्याला मेजर मायनर हा प्रकार होता. ते काय करू लागले माहिती का, इतिहासाचेच काही सब्जेक्ट, समजा MA आहे, हे सब्जेक्ट इतिहासाचे मेजर म्हणून आणि हेच इतिहासाचे सब्जेक्ट मायनर म्हणून आणि इतिहासाचा दुसरा एखादा पेपर इलेक्टिव्ह म्हणून, म्हणजे सगळे इतिहासाच त्याला जायचं, मग त्याला चॉईसच कुठे राहू लागला बाहेरचा एखादा विषय घेणार. तो तुमच्या म्हणण्यात एक लक्षात येते की द स्टुडंट हॅव not liberty, but student must have at least that choice. If you want to take it from the same discipline, yes sir, he should have it. If he or she want to have it from other discipline, let him or her do that. परंतु आता हे झालं सर इन प्रिन्सिपल बोल तात्विक पातळीवर. But when it comes to implementing the timetable and examination and other things and workload, many more things are there. म्हणजे आपण स्टेजवर कसं म्हणतो सर, आता विद्यार्थ्याला कुठल्याही विद्यार्थ्याला कुठलं काही घेता येईल, पण तसं आहे का प्रत्यक्षात ना. इट इज नॉट फ्रीडम, इट इज चॉईस. अँड वेन आय से चॉईस मीन्स माय राईट टू सिलेक्ट द थिंग आउट ऑफ द अवेलेबल. उपलब्ध पैकी निवडीचं स्वातंत्र्य मला आहे किंवा निवड मला करता येते, काही निवडायचं स्वातंत्र्य मला नाही. त्यामुळं ते काही आणि उपलब्ध याच्या मेळ घालण्याच्या प्रयत्नामध्ये कधी कधी असा इश्यू येतो. आणि जसं की सर म्हणतात तसं ऑनरेबल वाईस चान्सलर इज लुकिंग इन टू द मॅटर अँड परहॅप्स इफ द इश्यू इज प्रेस सम सोल्युशन मे बी देयर. बट लेट मी अगेन टेल यू, इट इज द युनिव्हर्सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन. सर एक माझा पण एक असा प्रश्न आहे. सर असं म्हटलं जातं की संस्कृत इज अ मदर लँग्वेज ऑफ ऑल लँग्वेजेस, पण तू संस्कृतलाच NEP मध्ये कुठेही इम्पॉर्टन्स दिला गेलेला नाही असं दिसतंय. तुम्ही एकदा वाचून पाहा. आय वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड द पॉलिसी डॉक्युमेंट अगेन. कारण आमच्या आता सिलेबस आम्ही जे पाहिलेलं आहे सर, आता जेवढे काही सिलेबस आम्ही पाहिले, पण त्या सिलेबस मध्ये असं संस्कृत हा विषय कुठंच दिसत नाहीये. No. I think you belong to the, I think this engineering college. No, sir. I am from Art Commerce Science College. Okay, I agree. Now this is the recommendation of policy that there should be encouragement and there should be department of Sanskrit in all universities, so that there will be deep study in Sanskrit. परंतु आणखी आता सर टप्प्याटप्प्याने होईल ना.
आजच सगळ्या गोष्टी कशा होती सर? महाराष्ट्र सरकारला 2025 उजाडले NEP इम्प्लिमेंटेशन सुरू करायला, म्हणजे 5 वर्ष आपले अशीच गेले. वेट अँड वॉच. कदाचित पारंपरिक विद्यापीठामध्ये संस्कृत विषय उघडला जाईल, मग ते हळूहळू प्रत्येक ठिकाणी येईल. बट लेट मी टेल यू, इन द डॉक्युमेंट इट इज क्लिअरली रिटन दॅट संस्कृत इज a ज्ञान भाषा and our history, our knowledge lies there, so there should be encouragement to Sanskrit. But at the same time, the policy says there should be encouragement to other classical languages of the India also. That is the thing there. But कुठेतरी झुकतं माप किंवा दोन तुपाचं जास्त वाटा संस्कृतला आहे, दॅट आय मस्ट से. आणखी ते तुमच्यापर्यंत आलं नाही, त्याला वेळ लागेल, बट इट विल कम. आणि परत सांगतोय ना, आता दिस इज रिटन देअर, बट हाऊ सिरियसली युअर गव्हर्नमेंट लुक ॲट दिट, दॅट इज अगेन अनदर इश्यू. आता काय बोलू तुम्हाला ओपन प्लॅटफॉर्मवर, का मागची इलेक्शन होईपर्यंत आपलं गव्हर्नमेंट किती दिवस टिकणार हेच आपल्याला माहित नाही, तेच अस्थिर होते. आता हळूहळू आता फडणवीस साहेब आले, बघतील काय ते करायचं, आणि फडणवीस साहेब आल्यामुळं संस्कृत येईल हळूहळू. राईट? ओके सर. येस सर, येस. राईट. होलिस्टिक डेव्हलपमेंट. तर डेफिनेटली येईल. काही दिवस अगोदरच, 2-4 दिवस अगोदरच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचं पत्र विद्यापीठाला प्राप्त झालं आहे, आणि माननीय राज्यपालांनी सुद्धा यावर विद्यापीठांनी काय ऍक्शन घेतलेलं आहे टू स्ट्रेंथनिंग द संस्कृत डिपार्टमेंट, दे हॅव आस्क्ड इन देअर क्वार्टरनरी रिपोर्ट. सो सर माझ्या लेखी ह्याच्यापेक्षा दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. आपले हे सगळे राज्य विद्यापीठ जे अफिलेटिंग आहेत, कॉलेजच्या ओझ्याखाली मरत आहेत, दबून गेलेले आहेत. त्याला पर्याय म्हणून ह्या NEP काय सांगितलंय की ऑल सिंगल डिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटीज विल बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी. मला सांगा, आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, तुम्ही अमरावतीला असता, अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठाकडे किती कॉलेजेस आहेत? 50, जास्तीच्या 100. मी अंदाजे म्हणजे सांगतो, माझ्याकडे फिगर आहे, तुम्ही काढलेला कुठेतरी एक पेपर लिहित असताना, मॅक्सिमम 100. तुमच्याकडे किती आहेत? 400 कॉलेज. आमच्याकडे सर सध्याचा आकडा जो आहे तो जवळपास 446चा आकडा. मी 400 सांगतो. मला सांगा, हे पॉलिसीचं रेकमेंडेशन फॉलोच करायचं ठरवलं तर तुमचं अर्ध वजन कमी होऊ शकतं. अर्ध वजन काय सर? म्हणजे त्यापेक्षाही आम्ही 10% वर येऊ शकतो. नाही, 10% सगळेच नाही जाणार. समजा अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठाला जर मल्टीडिसिप्लिनरी बनवलं तर त्याच्या बाजूचे 1-2 जिल्हे तिकडे जातील. अगदी सर. किंवा नागपूर विद्यापीठाचा लोड त्या रामटेकमुळे कमी होईल, किंवा नांदेडचा लोड कदाचित तुमच्या परभणीच्या विद्यापीठामुळे कमी होईल, किंवा मुंबईवरचा लोड त्या SMDT मुळे कमी होईल, किंवा टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमुळे कमी होईल. तो म्हणजे ज्या गोष्टी करणं जास्त गरजेचं आहे तिकडे लक्ष गव्हर्नमेंट देत नाही. लक्षात ठेवा, गव्हर्नमेंट त्या सोयीच्या गोष्टी गव्हर्नमेंट लवकर करत असते. सर दॅट्स अ पॉलिसी. सर वेअर एक वन मोर थिंग, जे एक्सटर्नल स्टुडंट्स असतात, व्हेअर यू सी मीन्स ते या आपल्या ट्रेडिशनल जे रेग्युलर टीचिंग आहे, आता काही विद्यार्थी एक्सटर्नल स्टुडंट म्हणून पण फॉर्म भरतात आणि तर त्यांच्यासाठी म्हणजे हे NEP मध्ये ते कसं बघताय तुम्ही की ते एक्सटर्नल स्टुडंट्सला कसा चान्स राहील किंवा काय स्कोप, हे सगळं जे आहे ना, सिलेक्शन सब्जेक्ट. आणखी थोडं मागे जाऊन सांगतो मी तुम्हाला की या पॉलिसीचं पहिलं लक्ष आहे, खरं म्हणजे दुसऱ्या प्रेझेंटेशन मध्ये तरी मी तुम्हाला, ह्याच्यानंतर सेशन नाही ना सर? नाही. मग थोडा वेळ घेऊ शकतो आपण. या पॉलिसीचं एक पहिलं उद्दिष्ट असं आहे की equitable and inclusive access to higher education to many people. म्हणजे तुम्हाला सांगतो का, 21-22च्या डेटानुसार आपला GER उच्च शिक्षणाचा 28.4 आहे, 28.4. आणि या पॉलिसीचं लक्ष आहे की मला वाटतं 2035 पर्यंत किंवा त्याच्या मागे पुढे काहीतरी 50% करायचं आहे. आता हे लक्षात ठेवा, म्हणजे आज 28% आहे, जवळपास आणखी एवढंच वाढवायचं. 28% नुसार जर 4.33 करोड असे 30 करोड जर तर 50 नुसार जवळपास ते 9 करोडच्या आसपास जाईल.
ठीक आहे. आता लक्षात ठेवा, मागच्या 70 वर्षामध्ये आम्ही 28% आलो, तर राहिलेला आम्हाला आता फक्त 10 वर्षामध्ये डबल करायचे. आता मगाशी उत्तरे म्हणल्याप्रमाणे शासकीय कॉलेज फारसे वाढत नाहीत, विद्यापीठ फारशी वाढत नाहीत, टीचर अपॉइंटमेंट नाहीत, हे नाही ते नाही. ठीक आहे. वाढते काय आता? प्रायव्हेट कॉलेजेस वाढतील. ठीक आहे. पण प्रायव्हेट कॉलेज जरी स्थापन करायचं म्हणलं तरी त्यालाही पैसा लागतो. ते मॅनेजमेंटकडे पैसे सोय असावी लागते, तिथेही पैसा लागतो. म्हणजे प्रायव्हेट कॉलेजच्या वाढीवर सुद्धा एका पॉइंट नंतर मर्यादा असते. मग अशा परिस्थितीमध्ये ओपन अँड डिस्टन्स अँड ऑनलाईन लर्निंग कम्स ॲज अ व्हायबल अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे सरकारी कॉलेज जास्त निघत नाही, सरकारी विद्यापीठ जास्त निघत नाहीत, खाजगी कॉलेज निघण्यावर एक बऱ्याच आहेत, आणि आम्हाला GR तर वाढवायचं. याच्यावर काय ऑप्शन राहतो माहितीये का? ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग. तुम्ही म्हणलात ना एक्सटर्नल स्टुडंट, दॅट कम्स अंडर ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग. कारण या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक सूक्ष्म फरक आहे, तिथे आपल्याला एक्सप्लेन करायची गरज नाही. ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग, आता मुक्त विद्यापीठ ओपन युनिव्हर्सिटी आहे, परंतु तुमच्या विद्यापीठात जे होतं ना ते काय म्हणतात त्याला, दूरस्थ शिक्षण विभाग, नाही तुमच्याकडे ते वेगळंच होतं, त्याला एक्सटर्नल म्हणायचे त्याला तुम्ही, दॅट कम्स अंडर डिस्टन्स एज्युकेशन डिपार्टमेंट. हे दोन, आणि ह्याच्या पलीकडे तिसरा एक ऑप्शन तो म्हणजे ऑनलाईन एज्युकेशनचा. एव्हरीथिंग विल बी ऑनलाईन. मला वाटते केरळमध्ये कुठेतरी एक ऑनलाईन म्हणजे डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना सुद्धा झाली. मला सांगायचंय का ह्याच्यातून की गव्हर्नमेंटकडे आता फारसा खर्च न करता GR वाढवण्यासाठी ऑनलाईन म्हणजे ODL मोड आता जास्त प्रभावी वाटतो त्याला. त्यामुळे सर ड्युअल डिग्री प्रोग्राम हा त्यातला एक पर्याय. आणि त्याच्यावर आम्हाला फक्त शिक्षित करायचं सर. आता कसं आता ओपन प्लॅटफॉर्म आहे, मी काही गोष्टी भाषा बोलत नाही, आम्हाला फक्त शिक्षित करायचं. शिकल्यानंतर तू बघ काय करायचं. दिस इज द फॅक्ट. Am I right? Correct. This is the fact. मी दुसऱ्या ठिकाणी एक स्टेटमेंट केलं होतं की रिझर्वेशनचा उद्देश तेव्हा सफल होईल जेव्हा शिक्षणामधल्या रिझर्वेशन सोबतच नोकरीमधल्या रिझर्वेशन अंमलबजावणी होईल त्याची. समजा मी एखाद्या विशिष्ट कॅटेगरीचा आहे, मी शिक्षण घेतलं, माझ्या कॅटेगरीच्या आधाराने स्कॉलरशिप भेटली, मला फीस माफ झाली, आणि माझ्यासाठी नोकऱ्या शिल्लक नसतील, तर तो जो पर्पज आहे मला शिकण्याचा रिझर्वेशन देऊन, तो सर होणार आहे का पुढे? नाही. तोच मुद्दा इथे यायला लागला सर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. आणि बोला आता एम्प्लॉयमेंटला पर्याय काय काढला सर? आपण काढू पाहतो आपण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. मग त्यासाठी काय आणलंय? मग तुला काहीच नाही नोकरी भेटली ना, तू आपलं नट फील्ड कर, प्लंबिंगचं काम कर, वेल्डिंगचं काम कर, काय करायचं काम कर, त्यासाठी स्किल एज्युकेशन आहे. आता मी थोडं त्याला अतिशय खालच्या लेवलवरून सांगतो तुम्हाला, पण दॅट इज द थिंग. इफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट मच देअर, इफ इव्हन प्रायव्हेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देअर, द पीपल आय शुड से नाव, आता इथं लोकच म्हणेल मी, तरुण म्हणेल, दे शुड गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. It may be unorganized, it may be unrational, but to live the life, he or she had to go for that. And that's why my plain BA will not help me, my plain BCom will not help me. So along with that BA or MA or with BCom or BSc, I must have knowledge of at least one skill with which I can earn my livelihood. That is the thing here. परंतु सर एक सत्य तुम्ही आम्ही आता सगळ्यांनी स्वीकारलं पाहिजे. येत्या काळात सरकारी नोकरी हा प्रकार फार तुळत राहील. टॉपच्या फक्त जागा भरल्या जातील, टॉपच्या ज्या एक्झिक्युटिव्ह आहेत, ऑफिसरच्या आहेत, बाकी क्लास 3 वर बंदी येईल, क्लास 4 आताच आपण आउटसोर्सिंग केली आहे. कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब, आउटसोर्सिंग जॉब, डिलिव्हरी जॉब हेच होणार आहे. आणि यालाही मर्यादा आहे. शेवटी पर्याय काय तुम्ही आपल्याकडे? स्वयंरोजगार म्हणतो ना, आता वेगवेगळे शब्द येतात, स्टार्टअप आलं तिथं, मग किंवा काय ते अनेक स्कीम MSME आहेत,
many things are there. But the things are going to be difficult as far as the permanent and salaried employment jobs are there. But in the unorganized sector, where no rates are fixed, you have to find your way out. That is the thing. बरोबर आहे का सर? मेश्राम सर? सर, एक्सक्यूज मी. मग सॉरी टू से, म्हणजे ही आपण असं जी आधी एक वर्ण व्यवस्था होती, तुम्ही जसं म्हटलं होतं पूर्वी आपली एज्युकेशन सिस्टीम होती, ही त्याकडेच जात आहे असं इंडायरेक्ट? नाही, तसं नाही होणार सर. आय टेक माय वर्ड, इट इज नॉट ऍक्च्युअली. हा, अशी शंका आहे लोकांच्या डोक्यात. कारण काही गोष्टी एक लक्षात ठेवा सर, people in policy making are not permanent there. Not permanent. The things may take place in different way at the ground level. ग्राउंड लेवलवर गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने चालतात, परंतु तुम्ही म्हणतात असं काळजी घ्यायला हरकत नाही. बट इट विल नॉट टेक प्लेस लाईक दॅट. असं काही होणार नाही सर. जुन्या पद्धतीकडे आपण जाणार. फक्त ती काही लोकांच्या डोक्यामध्ये शंका आहे. इट विल नॉट टेक प्लेस लाईक दॅट. काळाची चक्र उलटी फिरत नसतात आणि कुठलंच गव्हर्नमेंट कॅनॉट अफोर्ड दॅट. करू शकतं का? नाही. शेवटी मताचं राजकारण सगळ्यालाच करायचं असतं. इट इज नॉट पॉसिबल. असं काही होणार नाही. विश्राम सर, मला वाटते बराच वेळ झालाय. मागचे 2 तास मी बोलतोय. तर सर सेशन संपूया सर. हा, मला वाटतं आपण थांबायला हरकत नाही. नक्की सर, थांबूया. सर, आज खूप साध्या, सरळ आणि सोप्या आपल्या मातृभाषेत आम्हाला आपण या होलॅस्टिक आणि बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाबद्दलची माहिती दिली आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दल आमची जी मनातली प्रश्न होती त्याचा उलगडा करून साध्या आणि सोप्या भाषेत त्याचं उत्तर दिलं. त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो या सेंटरच्या वतीने, विद्यापीठाच्या वतीने आणि आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब नाईक कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या वतीने. आणि आपल्या अनुमतीसह हे सत्र संपवतो. खूप खूप धन्यवाद सर आपले. खूप